और देखा है GS3 पेपर, राइट? सो मैं अभी देवघर में हूँ. आई एम राइट नाउ इन देवघर, झारखंड. सो विथ मी सर इज देयर. So Ajeet Dahiria sir, so he is our Indian Polity and Governance faculty, and also he teach internal security and society plus social justice. So being a very core member of Deoghar IAS Academy, he is now taking offline class and also hybrid mode class of Indian Polity. तो अभी हम लोग लगातार यहाँ क्लासेस चल रही हैं और मैं यहाँ पर अभी आया हूँ. तो ये मौका अच्छा लगा क्योंकि यूपीएससी मेंस एग्जाम हो रहे हैं, तो सर के द्वारा इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे. मैं भी साइंस टेक और इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा. सर ओवरऑल भी आइडिया देंगे पेपर के बारे में, और सर के द्वारा इंटरनल सिक्योरिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे. और सर का अलग से GS2 पेपर, देयर नो एक्सक्लूसिव GS2 पेपर वेयर इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, ऑल दिस टॉपिक्स आर देयर, तो दैट विल कम देयर. So I think you all have to look into that part of and see that things are going in the right direction. तो सर जो हैं सर बताएंगे सारी चीज़ों को, सर का भी रहेगा. So मैं सर को माइक देता हूँ to speak few words. Hello everyone. Hi, as Nachiketa sir said, my name is Ajeet and I would be explaining about the GS3 paper, and exactly in GS3 paper, exactly internal security portion questions I would be covering here. And apart from this, there would be separate session which is totally related to the GS2 paper, which I cover importantly the GS2 paper, Indian Polity and Constitution and Governance, and the portion covered in GS2. So after the sir, I would be explaining some of the questions related to the internal security, and later by tomorrow we are going to start the GS2 paper discussion. So I'm again returning this mic to sir. Okay. So again Ajeet sir is there. He is the faculty for Indian Polity and Governance and Internal Security and also Society part. तो सर का भी टाइम आएगा और मैं भी हूँ. तो इस बार का एक बार पेपर का जनरल एस्पेक्ट जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट द 3 पेपर देयर, तो सर इज विद मी हियर. सो लेट मी फर्स्ट कवर द साइंस टेक एंड एनवायरनमेंट पार्ट, and then we'll get into sir's topic of internal security. He will cover the topic one by one. So let us come into that. You all know that GS3 paper has 5 components. ठीक है? One is economic development. Economic के question होते हैं, development. That is one part. And you know that half of the paper, almost 50% questions come from economics, economic development, right? और आपको पता है कि 10 questions, 150 marks, 150 words, that is a 10 marks, and 250 words, 15 marks. So total, you know, we have 250 marks question there, 3 hours paper. So almost 10 questions. 10 questions you have to write in 150 words. That is a 10 marks, right? And 10 questions one has to write in 250 words. That is a 15 marks, right? This is what is the current pattern of the examination question paper. So economic development, then comes science and technology, then comes environment topic, then comes disaster management. But surprisingly, this year there's no question of disaster management. There's a very surprise element which you know UPSC gives every year. हर साल यूपीएससी में कुछ ना कुछ सरप्राइज एंगल होता है, जबकि डिजास्टर्स इतने हुए हैं. ठीक है, अभी अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, इतने सारे डिजास्टर्स हुए हैं, है ना. फ्लैश फ्लड अभी हाल ही में उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में हुआ. उससे पहले अर्थक्वेक हुआ है म्यांमार में. एक भी क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट पे नहीं पूछा गया. दैट्स वेरी सरप्राइजिंग थिंग हियर. एंड देन यू नो इंटरनल सिक्योरिटी, जहाँ पर टेररिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, राइट, all those even cyber security, all these areas are there. So total 20 questions, the only 4 questions have 4 portions, 4 topics have been given highlight. That's economic development, science tech, environment, and security. Disaster management is totally gayab from the paper.
तो ये बड़ा हैरानी वाली बात है कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो डिजास्टर मैनेजमेंट में होना चाहिए। लेकिन आपको पता है यूपीएससी क्या है, सरप्राइज, इट ऑलवेज गिव सरप्राइज। आपको अपनी तैयारी करना है, आपको अपना तैयार रहना है। अब क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है ये तो यूपीएससी को पता। सो एटलीस्ट यू आर अवेयर ऑफ दैट। सो इफ यू लुक एट द ब्रेकअप, नाउ अनदर थिंग हियर, what is the analysis? If you look at the analysis of the paper, so one of the very important thing which I always say in my classroom that this paper is a dynamic paper. It has a dynamic nature of question, not the static. और धीरे धीरे स्टैटिक चीजें खत्म हो रही हैं। अगर मेंस की बात करें तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना। मतलब 360 डिग्री व्यू और अप्रोच दैट वन रिक्वायर्स, राइट। तो डायनेमिक नेचर ये पेपर का हमेशा रहा है, बिकॉज इकोनॉमिक क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, environment questions are based on current affairs, science tech questions are based on current affairs. But now what UPSC is saying, doing that, which I always insist my classroom, the theory into practice. That means whatever the theory part you are aware, whether economy or environment or science tech, you have to connect with the application part. This becomes very, very important. Applied nature of the question there. Right, this is where UPSC is emphasizing more and more. Another thing, very good important thing about your mains exam is that is in terms of government policies and program. That means you have to be aware of government initiatives, right? Whatever you have been covering from PIB, Press Information Bureau, about environment and science tech, you not get direct, but sometimes the cover stories are there, right? So here, government initiatives, then again policies and programs. I will be covering those areas. When I take the questions, you will be able to understand those kind of nature there, right? And then, as you know, that current affairs, you have to continuously read newspaper. This becomes very, very important part of this thing here. आप कितने भी तरह का प्रैक्टिस करें, टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर, जितना भी है, जब तक आप अपने थॉट्स को डेवलप नहीं करेंगे, अपने व्यू पॉइंट्स को डेवलप नहीं करेंगे, अपनी पर्सपेक्टिव डेवलप नहीं करेंगे, उस हिसाब से आपके आंसर की क्वालिटी नहीं आएगी। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि करंट अफेयर्स को रेगुलरली पढ़ना, और जो मैं बार बार करता हूँ, डेली करंट अफेयर्स, राइट। दिया के द्वारा, देवघर आईएएस एकेडमी के द्वारा, अभी हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल में, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाएंगे, वहाँ पर डीएनएफ हम लोग दे रहे हैं, डेली न्यूज़ फीड दे रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या किया है कि हर आर्टिकल, द हिंदू पेपर आर्टिकल विद समरी ऑफ द आर्टिकल विद द क्वेश्चंस, वी आर प्रोवाइडिंग दैट, सो दैट यू एज अ स्टूडेंट नो व्हाट दैट आर्टिकल कवर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखो कि आपको डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करना है, बहुत जरूरी है। एक टाइम आने के बाद जब आपकी सिलेबस कवर हो चुका है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डालनी है। तो दैट बिकम्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. So this is where this paper has the part of it. So current affairs, you have to balance with the theory part. Then what comes here? Now, if you look at the part of it, so if you look at this year paper, 2025 GS3 paper. So first thing is that no disaster management question. As I said, this is another thing. तो इसका मतलब ये नहीं है कि disaster management नहीं पढ़ना है. Right? It does not mean that if this year exam there is no direct in terms of disaster management question, you will stop reading disaster management, है ना? और आप सोचोगे नहीं अगले साल तो जब मैं मेंस लिखने वाला हूँ या लिखने वाली हूँ तो मुझे डिजास्टर मैनेजमेंट को ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये तो क्वेश्चन पूछते नहीं है. ऐसा नहीं. See, UPSC will always have some kind of change in the question paper. So disaster management question is not there. That doesn't mean that next year when you appear in the main exam, let's say when you appear in 2026 main exam, there will be question for disaster management, or maybe there may not be the question. But इसका मतलब ये नहीं कि 2 साल अगर disaster management नहीं पूछा तो third year question नहीं आएगा. That maybe those of you who are going to appear in 2027 exam, कि disaster management cannot be asked. Disaster management or all the 5 segments which I said, environment, science tech, security and economic development, आपको अपनी पूरी तैयारी करनी है. You have to do the entire homework
with all the topics there, right? So here, this is the observation which I'm writing here. Second thing is that there are 4 questions in environment. And 4 questions in science and technology. In technological aspect, like, nowadays we are talking about AI, nanotechnology, all the latest emerging deep tech, that what comes here. Now, so our 8 questions are there. Then you have a 3 questions in internal security. Security question there. But sometimes the mixed question is also there. Mixed question, like maritime, right? Maritime kind of economic development and the maritime security for India. So that also comes. And then what we observe that remaining, right? 9 questions, direct or indirect, in economic development. Now, what happens here? Agriculture-based questions are now getting in every paper. You know that agriculture is such a topic. Most of you study agriculture in geography or economy. But now agriculture is a part of science and technology. Agriculture is the part of environmental science. Agriculture is a part of a worldwide trade kind of development there. Agriculture is everywhere. But from economy point of view, agriculture-based questions are asked every year. हर साल एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रीलिम्स एग्जाम में भी 3 से 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्रीकल्चर पे आ रहा है. सो दैट्स व्हाट इज एग्रीकल्चर पार्ट कॉम्पोनेंट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द पेपर देयर. So now let's go to the question paper and I will discuss the area here. So let's look at the question paper here. So this is the GS3 paper. So distinguish between the Human Development Index, HDI, and Inequality Adjusted Human Development Index, IHDI, with special reference to India. That is theory part, right? Why is the IHDI considered better indicator of inclusive growth? Conceptual question, conceptual clarity, and in the context of India you have to write. Now look at here. Question number 2. What are the challenges before Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met? See here, IR based, you know, term tariff, Donald Trump, right? Donald Trump and his this time the presidency of Donald Trump government 2.0, India पे जो अभी टैरिफ लगाया गया है और कहा जा रहा है कि it is like a kind of sanction over India, and that is multilateralism. You know, at the time earlier WTO, World Trade Organization. अब क्या हो रहा है? That there is going to be skewed tariff, and particularly there is a bilateralism between 2 countries and protectionism measures. That is now making headlines. This is completely linked with the current affairs. American President Donald Trump's the move and taking the action against India, putting tariff of up to 50%. Very latest news is there. Then agriculture. Explain the factors influencing the decision of the farmers on the selection of high value crops in India. Farmers' decision making of selection of high value crops in India. Analytical question, right? Then now again agriculture. Elaborate the scope and significance of supply chain management of agriculture commodities in India. Sometimes you know the Kurukshetra magazine, when you read there, agriculture commodities and supply chain management. That part comes from agriculture problem. Now look at my area, science and technology area, right? And this topic I've been always covering in my classes. अगर आप मेरे क्लास के स्टूडेंट रहे हो और अगर आप मेरे क्लास में कहीं भी पढ़ा है और आप अपने नोट्स को देखेंगे तो you will find that what I have taught in the classroom, it is there. It is there in my book also, science and technology book from Oak Bridge publication, ITER project. International Thermonuclear Experimental Reactor, France, right? Recently, you know that Prime Minister Mr. Narendra Modi visited France for AI summit. He also visited to ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor. Now there is a question here. Question number 5. The fusion energy program in India has steadily evolved over the past few decades. Mention India's contributions to the International Fusion Energy Project, International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER. What will be the implications of the success of this project for the future of global energy? So now you see here, science and technology. Questions here. The fusion energy.
See, energy is another very, very important thing here. Particularly here, fusion power, controlled fusion power. That is the future. Energy sector. Again, you can link with the science and technology, you can link with the environmental aspect, you can link with the economy, you can link with geography. Again, it's a very applied area of the field there. And fusion power, hydrogen based, just what happens in sun and the star, where the nuclear fusion, right? But here we are talking controlled fusion power. And you know that in this case, I have been talking about this, a very important kind of reactor called tokamak reactor, which is a kind of a reactor, donut-shaped reactor, which can confine plasma, magnetic induction based confined plasma, and then heating up to a millions of degrees centigrade, similar to sun, and then allowing the hydrogen gas ionize, and just like what happens in sun and star, the fusion to form helium and generate the heat, which can be tapped, converted water into steam, steam to turbine, turbine to generator, and produce electricity. So now when you talk about this reactor, where controlled fusion power, controlled fusion reaction, nuclear reactions, which can be confined in a plasma based. So when you are writing the answer, you have to speak about technology. You have to write about technology there. And that is the future. This is the future of energy, because uranium, today we have uranium-based nuclear reactors. So one day what will happen? The nuclear reactors what consume uranium, maybe in future India has abundant thorium, will all get depleted after 200, 300 years. So, but sun and the hydrogen is a sustainable source of energy. Mankind can use hydrogen in terms of this technology for thousands of years. That is the future. And I've been always discussing all this in my classes. Right, these all things I've been talking about in the classroom there. So this is what comes here. And in this one, you know that one is the China, this ITER. 35 nations is a group of 35 countries. India is also a member country of this group, and that is in Cadarache, southern France, Cadarache, right, where this in world's biggest tokamak machine being constructed. Our Indian scientists are part of the project. Here is a very important collaboration with the DAE, Department of Atomic Energy, and we have one very important organization called Institute for Plasma Research, Gandhinagar, Gujarat. Scientists of this autonomous scientific organization, Institute for Plasma Research under Department of Atomic Energy, is a part of this ITER project. And this by 2035 going to have fusion power. In this context, China has done already artificial sun. South Korea has already done their Chinese tokamak reactor, you know, east, record-breaking temperature, right? That is done that. That means highest temperature achieved. Tokamak reactor, east, experimental advanced superconducting tokamak. Then K-Star, Korea, South Korea, they have done that. India has got Aditya, but we have not generated very high temperature, but we are also doing the research for so many decades. That's what the question is saying. So here one has to write that the benefits, what benefits can be worldwide at the same time India. You know, abundant source of energy, hydrogen, right? Radioactive waste, nuclear waste reduction. This all I have done in my notes. If you have covered my class, अगर आप मेरे क्लास को अटेंड किए हैं जहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ और अपने नोट्स को देखेंगे, ये सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है कि जहाँ पर वो बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, कि व्हाट आर द एडवांटेजेस देयर. मैंने ये सारी चीज़ों को लिखवाया भी है क्लास में, कई बार मैं लिख के बताता भी हूँ कि रेडियो एक्टिव वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट जनरेशन कैन बी मिनिमाइज्ड because we are using hydrogen. Helium can be used for multiple use, and 10 times higher power, 10 times higher compared to the normal traditional nuclear reactor, right? Then all those kind of things there can be written here, but that is what the thing can be, and one can conclude there. I will be coming to such kind of thing in my explanation part again in the classroom program. This is what the future of the global energy, to create a big market for such reactors. Now look at here, biotechnology, another area of science and technology.
How can India achieve energy independence through clean technology? Through clean technology by 2047. When India celebrate 100 years of independence, 2047, clean technology, clean energy. How can biotechnology can play a crucial role in this endeavor? So two part. One is the clean technology, energy, and second part, how biotechnology can help in the clean technology. So in this question, right, in this question, one has to write from two contexts. That is in terms of clean technology, development in the country. Particularly clean technology development, we are talking from energy point of view. Energy sector, that is the power generation. Because pollution, air pollution, water pollution, all these pollution issues, right? Particularly air pollution, burning of fossil fuels. So you can also connect with environmental factor. This question, many times question on science and technology connect with the environment. तो यहाँ पे environment के साथ आप connect कर सकते हो. टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, environmental aspect की बात हो रही है कि हमें स्वच्छ ऊर्जा चाहिए फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एनर्जी पावर जो. अब आपको पता है इसमें कई सारी चीजें हैं. वन इज हाइड्रोजन, green hydrogen, like the production of hydrogen gas from the electrolysis of water. Water को split करके from current we can produce the hydrogen, and that hydrogen can be used. और इसका बहुत सारा use है हाइड्रोजन का. We can use in cryogenic technology, right? Extremely low temperature, that we can do that. What we have a space craft and everything there. Then direct combustion, and what will produce there? Water, or hydrogen can be mixed with this CNG, hydrogen CNG blending, or hydrogen can be even, you all know that, fuel cell, hydrogen fuel cell, battery, fuel cell technology. तो आपको क्लीन टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है. ग्रीन हाइड्रोजन, अभी हमारा मिशन है नेशनल हाइड्रोजन मिशन. इन दिस कॉन्टेक्स्ट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, where production of green hydrogen, and that recently, if you are aware, current affairs, that Indian Railway has developed locomotive engine hydrogen powered train in India. Then what comes here, right? So energy part is focus on energy aspect, how we can go for the energy power there. So one example I have given, that we can look into such kind of cleaner technology where we can produce such kind of power, and then that can help us in terms of going forward there. Now another thing is that biofuel. Question is indirect. How biotechnology can play an important role? Like biofuel technology. The biofuel, that one thing is the bioethanol, blending of ethanol with the petrol, and second thing biodiesel. And already we have a national biofuel mission, which we are trying to achieve 20% targets of the blending of ethanol with the petrol, EBP, ethanol blended petrol, and then biodiesel production. Then biotechnology can also help in this one. Microorganism based microbial fuel cell technology. Fuel cell technology which can work with microorganism like bacteria, that we can have. Bioethanol, fermentation technology. Biofermentation. The fermenter and the biofermentation technology, that can be the part of it, right? Even the environmental aspect, I've been teaching in my classroom, biogasification, organic waste, right? Biogasification, gasifier based technology, sugarcane bagasse, right? Or let's say rice husk can be gasified, producer gas, and we can produce electricity. So all those things, and biotechnology play a very important role because of such kind of technology which can use such methods and such microorganism to produce their one. I will be going to such detailed explanation in one by one question part, but I'm giving overview. So that is where 2047, when we are looking for our energy security, and that context, what critical role biotechnology can play, that question there. Now you will see environment question. What is carbon capture, utilization, and storage, CCUS technology? And what is the potential role of CCUS in tackling climate change? So climate change perspective, I've been telling that climate change questions are being asked in the examination. तो अगर आप यहाँ देखें तो इसमें
मैं अब ये भी बता कि मैं वापस में आऊँगा इसमें. Now let me take the science tech question, but see here, again environment question. Sea water intrusion, coastal aquifers, right? Coastal aquifers, major concern in India. What are the causes? Sea water intrusion, remedial, and measures to combat this hazard. So one way indirectly linked to disaster. Water part of it. Now you look at here, terrorism is a global scourge. That how has it manifested in India? Sir will cover that. Right, Ajeet sir will be talking about the terrorism part of intersecurity. Then government of India recently stated left-wing extremism, Maoism, Naxalism, security question. Right, to be eliminated by 2026. What do you understand by LWE and how are they people affected by it? Very direct question. What measures have been taken by government to remove this one, LWE, left-wing extremism? Then you can see here, explain how the fiscal health index. Now again, economic question. Can be used as a tool for assessing fiscal performance of states in India. In what way would it encourage the states to adopt prudent and sustainable fiscal policies? So on fiscal policy, economic question. Then now see, this again economic question. Discuss the rationale of production-linked incentive scheme. What is achievements? In what way function outcome of the scheme should be there? Then you can see here, another thing here, groundwater, environment question. Examine the factors responsible for depleting groundwater in India. What are the steps taken by the government to mitigate such depletion of groundwater? Last year भी ग्राउंड वाटर पे क्वेश्चन था, इस बार भी ग्राउंड वाटर पे क्वेश्चन है. देन फूड प्रोसेसिंग, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एग्जाम. Examine the scope of food processing industries in India. Elaborate the measures taken by government in food processing industry and employment generation. Then now science and technology. See, first time covering the science tech. I'll get back to the environment also. So ITR project, fusion power, clean technology and biotechnology, and third area nanotechnology. If you look at from 2013 exam, when the pattern of the exam was changed, and you review that nanotechnology based 3-4 times UPSC has asked the question, right? See here, how does nanotechnology offer significant advancement in the field of agriculture? Again, this topic in science tech class, I've been always discussing about that. So how can this technology help to uplift the socio-economic status of farmers? So now what has been asked, if you look at third question in science and technology, that is about nanotechnology. One can easily write this one. Agriculture. What is nanotechnology? You know that. Where we use nanoparticles, right? Nanoparticles, nanomaterials, right? Which is of size, you know that. Which they're part of 1 to 100 nanometer, right? That is a range where 10 to power minus 9 meters. We're talking to that scale, nanomaterials. And in that context, the nanotechnology is it is a material science, right? Variety of application. When you write the question, you write about introduction about nanotechnology. So you take space, defense, security, biomedical field, biotech, right? Medical science or consumer product. You all know that. Whatever the products we are now using, such nanotechnology has come into the market. Then what comes here? Food, environment. Everywhere nanotechnology has now entered. Emerging technology of 21st century, right? Then in terms of electronics, computing, everywhere nanotechnology has entered. And that in this context, what comes here? Agriculture. Agriculture application of nanotechnology. The multiple use is there. Let's say, for example, you know that sensor, nanosensor, which can be used in the field of IoT, Internet of Things. IoT, where we'll use communication technology, where the devices with embedded sensors connecting with help of internet, and they can communicate with each other. That is where called IoT. But the sensor with the device, let's say in agriculture field, you have a sprinkler, you have irrigation system, you have a sprinkling of fertilizer, pesticide, or crops, all things, all these kind of machineries, we can connect through the sensors and through communication devices with the IoT, that can work.
And now, smart sensors, nano sensors, like here, smart devices, devices which can work like a humans. Robotic farming, precision farming. So there, nano sensors can play a very important role. Another thing which can come here, this one, precision farming, where such kind of things we can use there. Then what comes in agriculture? Use of nano silver, which can kill pest and bacteria, harmful bacteria, right, can be eliminated by this nano silver. Then you know about it, nano urea, DAP, nano urea, which can be dissolved from Government of India, IPCO, has now come out with nano urea, which can more efficient than normal urea fertilizer which we use. It has a lesser consumption, more efficient absorption by the roots of the plant, better growth. है ना, इसमें जल्दी वो एब्जॉर्ब कर सकता है, ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकता है, यील्ड दे सकता है, और कम खपत हो सकता है. इफको जो कंपनी है वो उसके द्वारा डैप जो है ये काफ़ी न्यूज़ में अभी रहा है ना, तो ये चीज़ को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा है. नैनो सिल्वर का यूज़ हो सकता है. प्रिसीजन फार्मिंग हम ऐसे नैनो डिवाइसेस वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं. देन स्मार्ट डिवाइस में नैनो सेंसर वगैरह काम हो सकता है IoT के तौर पे. तो व्हेन यू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, तो आप खाली नैनो यूरिया लिख के काम मत खत्म करो. ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, नैनो यूरिया लिख के बस हो गया द एंड, कि वही आंसर कंप्लीट हो गया. नो, गो बियॉन्ड. और क्या क्या नैनो टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर सकते हैं, है ना. नैनो फिल्टर यूज़ हो सकता है, जहाँ पर हम जो भी चीज़ें हैं सॉइल में हार्मफुल सब्सटेंस को हम फिल्टर कर सकते हैं, राइट, विच कैनॉट बी गोइंग टू द सॉइल. तो देयर कैन बी मल्टीपल वेज nanotechnology can play a very important role in agriculture, but there are limitations and negative side also. Every technology has positive and negative side. तो इसमें नेगेटिव साइड भी यहाँ पर है, इस केस में यहाँ पर इसमें नेगेटिव साइड भी यहाँ पर आ जाएगा इसमें जो है. तो ये तो बेनिफिट से हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव भी हमें ध्यान रखना है. तो अब देखो ये क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड 250 वर्ड्स, हाउ डज नैनो टेक्नोलॉजी ऑफर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. So that advancement need to be talked about. Examples have to be given. Very, very important examples, application. How can this technology help in uplift socio-economic status of farmer? तो आप यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हो कि लेट टेक एग्जाम्पल नैनो यूरिया. यहाँ कम पैसे लगेंगे, कम खपत होगा, कम खर्च होगा, और साथ साथ सॉइल की हेल्थ मेंटेन रहेगी, सॉइल पोल्यूट कम होगा, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होगा, और उससे जो फार्मर का जो बर्डन होता है तो वो से कम पड़ेगा. तो दैट पार्ट यू कैन एक्सप्लेन इन द क्वेश्चन. नाउ गोइंग फर्दर हियर, सेमीकंडक्टर, अनदर साइंस टेक क्वेश्चन. इंडिया एम्स टू बिकम अ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब. यू नो द नाउ मेक इन इंडिया प्रोग्राम, आत्मनिर्भर भारत, and our dependence on other countries for electronic items and the hardware segment. Now we are developing semiconducting fab. That part comes. What are the challenges faced by the semiconductor industry in India? Challenges. And then mention the salient feature of India's semiconductor mission. India's semiconductor mission. So if you look at the fourth question in science and technology, fourth question is on semiconductor. That is the manufacturing. तो इसका क्या क्या क्वेश्चन का पार्ट है. पहला तो ये है, फर्स्ट पार्ट अगर क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या बात की जा रही है कि भारत जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना जा रहा है, उसका एम है, लक्ष्य है. तो व्हाट आर द चैलेंजेस फेस बाय द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया. तो यहाँ पर जब आप आंसर लिखेंगे तो पहला ये चीज़ है कि वी आर फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, right, development, because this will minimize what? This is going to minimize our import. China, we are taking from China, Japan, so imports, that is another thing is there. And recently what you will write, that semiconducting fab, right, and we are bringing the investment of domestic companies
At the same time, we are trying to bring this FDI also, foreign direct investment. We are inviting the big giant multinational companies to set up their plant in India to manufacture semiconductors, because that's used in everywhere, mobile, laptop, computer, AC, whatever. These all electronic systems are coming. So that part comes. No, but what is the question asking here? Challenges. So challenges, if you look at, one is that this technical manpower. See, our mindset, societal mindset, इंजीनियर बनना है तो क्या इंजीनियर बनना है? तो हमें इंजीनियर बनना है तो कंप्यूटर साइंस लेना है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है. अब हम एआई में जाएंगे, बिग डेटा में जाएंगे, लेकिन कितने लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लेना पसंद करेंगे? हैं उसमें लेने वाले लोग हैं जिसको पता है कि हम भविष्य में ये एक ऐसा फील्ड आएगा जहां पर इतने रिक्वायरमेंट होंगी, इतनी जॉब्स क्रिएट होंगी. और हम कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग कहां पर है? दिमाग का चीज, सॉफ्टवेयर, सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री. But what we are talking about here, hardware. Software is one thing which Indians have created a mark. But अब उसमें क्या stagnancy आ रही है. तो हमें बहुत सारा मैन पावर का जरूरत पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्टिकुलर सेमीकंडक्टिंग इंडस्ट्री में जो है, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट, द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट. और यहाँ पे नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, नैनो टेक्नोलॉजी आता है. दैट पार्ट कम्स है. देन व्हाट कम्स हियर? द इन्वेस्टमेंट. Government will give, then again foreign companies setting up the plant. But now अब ये tariff war जो हो रहा है, with Donald Trump strictly saying that want to move out all the manufacturing from China to USA, and Donald Trump government is very now want complete American thing, is now taxing those companies which are having the manufacturing in China. They will not like in India also, and giving those kind of incentive to the companies, American company, which are developing in US only, like particular Apple, Apple का लेके भी चल रहा है अभी, क्योंकि वहाँ पर करने की बात की जा रही है, चाइना से उसको कनेक्ट. तो वही चीज़ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी होगा, जो इस तरह का जो टैरिफ वॉर चल रहा है, दैट कुड बी अ प्रॉब्लम हियर, कि इन दिस इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ इट, दैट यू कैन highlight in your answer there, right? That part of there. Then again, you require government policies and you have to set up the infrastructure. See, it is a high-end kind of technology. ये वो नहीं है कि 10 कंप्यूटर लिए बैठ के बस कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर दिया, इंजीनियर बन गया, कंप्यूटर इंजीनियर. 10 एक छोटा कमरा लिया, 10 कंप्यूटर लिया, बस स्टार्ट हो गया कोडिंग 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 कोडिंग, है ना? ये वो चीज़ नहीं है. You require particular manufacturing unit, high-tech instrument, right? Again, do we have high-tech instrument? We have to again import from Japan, from South Korea, from US, from France, from Germany. We have to set up the lab to build up a chip, and it's a very advanced technology. So you require this kind of instrumentation here. There's a fabrication lab there. Then again, advanced technology. कि हमें एडवांस टेक्नोलॉजी काम करना है, ये नहीं कि जो टेक्नोलॉजी आज से 20 साल पुरानी हो चुकी है उस पर कोई काम नहीं होगा. वी नीड सम इमर्जिंग एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज वेयर द इलेक्ट्रॉनिक्स, द मार्केट व्हेन यू टॉक अबाउट, तो देयर वी रिक्वायर देयर. अगेन यू नो रिसाइकलिंग, लाइक इफ यू लुक एट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, रिसाइकलिंग पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, बिकॉज मोर एंड मोर दिस ई वेस्ट विल बी देयर. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? इट टॉक्स अबाउट दिस वन, mention the salient feature of India's semiconductor mission, their government mission. So always remember that India mission on AI, India's mission on nanotechnology, India's mission on supercomputers, so India's semiconductor mission. Any mission program will always look into all these challenges what I've written here, and it always talks about, whenever we talk about any such mission by the central government, here we have a mighty Ministry of Electronics and Information Technology. We have a central ministry here, which is a nodal ministry to have this. And we have a department called DIT, Department of Electronics and Information Technology. So what comes here? The first thing is what? First thing what, remember, that is infrastructure. What comes the second thing? It's a very simple thing. R&D, research and development. We require to do research and development. What comes the third one? Skill development. Manpower and skill development. Capacity building. Training part.
Then what comes? Foreign collaboration, international collaboration with other countries. That is what is required. Then again what? Startup ecosystem. We have to use the manufacturing. So you know that fifth will be what? Startups, entrepreneurship, startup ecosystems, and support by the government to such kind of companies which will do this kind of fabrication. All this is part of the mission program. Research and development of new technology, all this comes here in this part here. So 4 questions in science and technology, right? ये बहुत important है. This is very important for the examination. ठीक है? तो ये part है. So now look at here. So this was there. Then again now environment question, right? 4 questions environment. Now see, mineral resources are fundamental to country's economy. You can connect with economy and environment, and these are exploited by mining. So EIA, environmental impact assessment. Why is mining considered an environmental hazard? Explain the remedial measures required to reduce environmental hazard due to mining. So you can connect with disaster, environmental impact assessment, this question. And then Paris Agreement, climate change. Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement 2015, COP21. ये भी मैं क्लास में हमेशा बताता हूँ, right? And mention how these have been further strengthened in COP26, Glasgow Summit 2021, where we have revised our targets, what is called NDC, National Determined Contribution, and what is how has the first NDC been updated in 2022, earlier NDC and the revised one. And then again internal security question, northeastern states, that is, Manipur, the Manipur is still under problem. That is, what are the major challenges to internal security peace process in the northeastern states, insurgency and all. Then map the various peace accords. So you have to write about peace accords and agreements initiated by the government in past decades. And then you have here another thing, why is maritime security? Again, you can link with security, are vital to protect India's sea trade, right? Discuss maritime and coastal security challenges and way forward. Coastal challenges, security challenges. Now, Great Nicobar redevelopment project, India is now making that. China's pearl of string theory and all this string of pearl theories all comes here. So I think security has got 4 questions. So if I just update here, if you look at here in this context, so if you look at here, what I've given the part of here, the breakup here. So you have a 4 question security, right? So I can take this 4 questions in the security part, and around 8 questions are economy. So now gradually what do you find? What is the new trend you are seeing that? The new trend, what do you see that if the disaster management question, at least one was there, at least, अगर मान लीजिए कि इस बार के पेपर में एक भी डिजास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चन होता है ना, तब जाके इकोनॉमिक क्वेश्चन 7 हो जाता. तो यानी कि इकोनॉमिक क्वेश्चंस जो पहले 10-12 होते थे, अब उसको घटा के कम किया जा रहा है. एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है. साइंस टेक के क्वेश्चंस बढ़ा दिए जा रहे हैं. 3 से 4 होते, 3 से 4 किया गया. इन्वायरमेंट के 4 क्वेश्चंस हैं, सिक्योरिटी के 4 क्वेश्चंस हैं, राइट? तो डिजास्टर मैनेजमेंट का 2 क्वेश्चन रहते, तो यहाँ पर इकोनॉमिक क्वेश्चन वेटेज कम हो जाता. लेकिन मैंने क्या बताया कि आपको सब टॉपिक्स को तैयार करना है. You have to read about every topic there. You should not be thinking only one topic or 2 topics. You have to prepare in all way, right? So now what you come across, I am coming to finally this environment part of it. So I have already mentioned here. So let us now come to the environment topics here. Environment questions, if you look at. So first I'll go again back. I told you that I'll get back here. I'll get back to the part of here. So let me start with the sequential way of the question here. So you know that sequential way of question if I look at. So if you look at this one, the first thing is this one. Question number 7. What is carbon capture, utilization and storage? What is the potential role of CCUS in tackling climate change? So here, what is first thing here? CCUS. Carbon capture, utilization and storage technology. Now this technology is a very upcoming technology where carbon which is sequester, we have to not only capture sequestration, let's say from factory, industry, so you have to explain that, thermal power plant, wherever the, wherever we burn coal, natural gas, which generate greenhouse gases like carbon dioxide, where the emissions are there. This emission, which need to be captured. Now, when you say capture, one is a direct capture.
direct carbon capture. So those technology which can directly capture CO2 from their one, from the chimney of the factory industry and all this. And second is what? We can have transfer. We can capture it directly, like, let's say carbon dioxide going to the air. So we can have some saline formation to absorb it, create a sink. Create a sink. One could be natural, another could be artificial, man-made, like forest, direct capture, photosynthesis by the plants. Brine, B-R-I-N-E, brine. Brine is a salt solution. Just like sea and ocean, in carbon cycle, you have studied about carbon cycle, sea and ocean directly absorb CO2. So same way, we can create artificially brine, saline solution which can direct capture CO2. So this is direct carbon capture. Or through forestry, natural ways of their nature-based solution. Or even freezing the air. There's also technology which can freeze the air and convert carbon dioxide gas into dry ice, solid carbon dioxide. Right? That can be done. And second is what? Capture, then transport. We can transport through pipe. And then we can bury, that is a bury deep underground. There is storage. Again advanced technology, underground and then storage in deep formation. And then conversion into some kind of a fuel or chemical conversion to some other forms. So in this question, first you have to explain carbon capture utilization technology. That means you have to explain this technology, discuss this technology, right? This is what is asked here. And then second part of the question, since it's 150 words, you cannot write everything detailed manner. What is the potential role of tackling climate change? So you know that is very simple. That is this technology tackling the climate change. Global warming, climate change, carbon dioxide gas as a greenhouse gas. So what will happen there? Directly with CO2 gas, which is causing the greenhouse effect, global warming, this CO2 will be absorbed. Right? The amount of CO2 going to the atmosphere can be reduced. That is what is called something called here, which can help in net zero. It can help in the achievement of net zero target. Paris Agreement, right, talks about net zero by 2050. If you look at Paris Agreement, you can give the reference here. आप यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हो पेरिस एग्रीमेंट में ये टारगेट है कि 2050 बनना है तो हम नेचुरल वे से हम कार्बन कैप्चर करें या साइंटिफिक वे से टेक्नोलॉजिकल वे से करें टू मीट दिस टारगेट ऑफ 2050 नेट जीरो टारगेट CO2 गैस एमिशन देयर तो दैट इज व्हाई द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज देयर ठीक है एंड देन यू हैव टू कंक्लूड योर आंसर नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 sea water intrusion in the coastal aquifers we are talking aquifers where you have a groundwater and all this storage. Aquifers is a major concern in India. What are the causes of sea water intrusion? Causes of that. Again, climate change, global warming, sea level rise, and the remedial measure to combat this hazard. So, if you look at what is second question has been asked. Second question, that is a coastal water intrusion, right, to aquifers. Causes of that. So if you look at causes, simply you know that there's global warming, climate change impact. What is happening there? Sea level rise. Sea level rise. समुद्र स्तर का जो बढ़ना हो रहा है तो अभी क्या हो रहा है ये इसके कारण क्या हो रहा है कोस्टल सबमर्जेंस हो रहा है कोस्टल फ्लडिंग हो रहा है इससे क्या हो रहा है कोस्टल फ्लडिंग हो रहा है कोस्टल एरियाज आर गेटिंग फ्लडेड तो जब कोस्टल एरियाज में सी लेवल राइज में जब पानी यहां पर आएगा सी वाटर तो व्हाट विल हैपन देयर सबमर्जेंस विल बी देयर एंड द ऑल दिस सी वाटर विल फाइनली गो टू द ग्राउंड वाटर aquifers that will get this will be getting in terms of that. Another thing is what? Deforestation. Coastal area में क्या हो रहा है? Let's say if you don't have a barrier,
deforestation. Deforestation part of, let's say mangroves, removal of mangrove cover, mangrove forest. This mangrove forest and the removal of this mangrove forest cover. So sea water will easily get inside. Then you know that natural calamities like storms, tide, like storms, high storms, cyclones. Again, cyclone is caused by global warming. Then high tides. Then tsunami. Suppose all these natural calamities which can, again the sea water there, and you don't have rocks and something. Another thing here, sea erosion, erosion of the sea, erosion of the sea, and it's happening there, coastal erosion. All the sea water will get inside there, causes of that. So you have write 3-4 points about the causes. And what is the second part of the question is asking? Second part of the question is the remedial measures to combat hazard. So what are the impacts here? So you have to write about cause, then you write about impacts. Drink the water supply, salinity, what is impact? So what impact will be there? High salinity, and there is more intrusion, so what will happen there? It will suffer the aquaculture, fishery, aquaculture, seafood, fisheries, that will be, so that have direct impact on social, economic livelihood of the local communities, coastal community, they will suffer. Wetlands, wetlands will get suffered. तो यहाँ wetland को असर होगा, जो wetlands हैं उस पर असर होगा, जो aquaculture है उस पर असर होगा, जो agriculture है उस पर असर होगा, वहाँ के लोगों के livelihood पे असर होगा. और इसका रेमेडियल मेजर बताना है कि हम उसको कैसे रोक सकते हैं. बहुत सिंपल सा है. रेमेडियल मेजर्स क्या है? एफॉरेस्टेशन, planting of mangroves. Mangrove is a very good mangrove plants and other such kind of plants which will not allow the sea water to get inside, like mangroves. यहाँ पर एक प्रोग्राम है, mangrove for future program. IUCN is running mangrove for future program. India is also partners here. Mangroves for future program, MFF. Mangroves for future program, IUCN run program. India is also part. Planting of mangroves and all those kind of trees which can stop the sea water getting there. So those remedial measure, ये natural measures है, nature based method है. अगर ये नहीं होता है तो what we can build? Sea wall. We can build sea wall just like tsunami wall, cyclone wall built in Japan. We can create those kind of sea walls, not allow the sea water to get inside. So that part you have to write, right? अब जो मैं तीसरे क्वेश्चन पे आता हूँ. तीसरा क्वेश्चन जो है, अगर आप देखो तो ये है क्वेश्चन, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन यहाँ पर है. दैट इज ये चीज ग्राउंड वाटर का क्वेश्चन 13, 250 वर्ड्स. दो क्वेश्चन 150 वर्ड्स, अब दो क्वेश्चन यहाँ पर 250 वर्ड्स का है. एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर्स इन इंडिया. फैक्टर्स causing groundwater depletion. What are the steps taken by government to mitigate such depletion of groundwater? गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप लिया जा रहा है मिटिगेशन ऑफ ग्राउंड वाटर. तो अगर आप यहाँ देखो आप, तो अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो है वो ग्राउंड वाटर पे है. ग्राउंड वाटर डिप्लीशन. तो पहला है फैक्टर्स. तो फैक्टर्स यू नो दैट ओवर एक्सट्रैक्शन, जो हम बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का, ठीक है. फिर क्या हो रहा है? दिस लैक ऑफ रिचार्ज, क्योंकि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते. जैसे कि रेन वाटर, वी अलाउ द रेन वाटर टू जस्ट पास बाई, राइट. हम रिचार्ज नहीं करने देते, सब बह जाता है नदी नालों में. So that rainwater harvesting is missing there in our town planning, urban planning, and all these areas. We are not using it. Again, we are extracting too much demand of urbanization, growth of human population, demand of more drinking water, and for agriculture, irrigation demands there. और क्या है? This one, loss of wetlands. We are destroying the wetlands, converting wetlands into some other land use. So wetland is like a sponge.
इट रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, तो वी आर लूजिंग दोज वेटलैंड्स, ये मैं क्लास में बताता हूँ वहाँ पर। तो ये सब चीज़ है। देन अगेन डिप्रेशन का रीज़न बताना है, वेटलैंड्स नहीं है, हम ट्रीज फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं, तो पानी कहाँ से आएगा? फिर लैक ऑफ जो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग या बाकी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, पर्कुलेशन नहीं होने दे रहे हैं, सारा कॉन्क्रीट जंगल, फिर ये ओवर एक्सट्रैक्शन वगैरह है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रिस्पॉन्सिबल व्हाट आर द स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू मिटिगेट ग्राउंड वाटर। तो आपको यू नो दैट अब जब मिटिगेशन के लिए बात आता है एंड गवर्नमेंट टेकिंग द स्टेप्स, तो यू नो दैट वी हैव अ जल जीवन मिशन, देन यू नो जल हरियाली मिशन जो है, and that program is there. Then you know that in this case we are now here nature based solution, NBS, that is again what wetlands conservation, right, preventing the water to go there, afforestation, planting of trees and all this thing, वृक्षारोपण वगैरह जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के बारे में बताना है यहाँ पर, है ना। तो ये आसान क्वेश्चन है जो आप लिख सकते हो, इस पर डाटा देना है, पर जो है ना जो भी इसमें डाटा वगैरह जो है। एंड देन कम्स टू अनदर क्वेश्चन हियर, दैट इज दिस वन। तो देखा जाए तो इन्वायरमेंट में ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है इन्वायरमेंट का, ये हजार्ड की बात कर रहे हैं, माइनिंग का, लेकिन आप कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि इन्वायरमेंट क्वेश्चन 5 है। देखो आप वेटेज ऑफ इन्वायरमेंट क्वेश्चन बढ़ जा रहा है। तो अब यहाँ देखो, मिनरल रिसोर्सेज आर फंडामेंटल टू द कंट्रीज इकोनॉमी एंड दीज आर एक्सप्लेन माइनिंग, व्हाई इज माइनिंग कंसिडर्ड इन वाटर हैजार्ड, राइट, एक्सप्लेन द रेमेडियल मेजर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द इन वाटर हैजार्ड। तो नाउ इफ यू लुक एट अनदर क्वेश्चन दैट इज ऑन द माइनिंग ऑफ मिनरल्स, तो यहाँ पोल्यूशंस के बारे में बताना है, क्या क्या इसमें होता है ना। तो उसमें क्या क्या होगा, जब तो पहला तो है इन वाटर पोल्यूशन, एयर गेट पोल्यूटेड, लैंड गेट पोल्यूटेड, वाटर बॉडीज, सरफेस वाटर, रिवर, स्ट्रीम, दे गेट पोल्यूटेड, ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड। और यहां पे क्या है, हजार्डस मेटल्स लीच आउट, दे आर मिनरल्स ना, मेटल्स, lead, cadmium, other metals, mercury going to groundwater and all this one. So health impacts. फिर क्या होता है, माइनिंग के लिए हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन, और जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, फ्लड हो रहा है, अर्बन हीट हो रहा है, तो उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, द हीट, ग्लोबल वार्मिंग, हीट वेव बढ़ता जा रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, फ्लड लाइक सिचुएशन हो रही है, ये सब माइनिंग का इंपैक्ट है। नॉइज पोल्यूशन वो भी एक फैक्टर है, we affect the entire area there, right? Then the loss of livelihood of the people, where the people health impact is there, but again the livelihoods of the people, agriculture will be lost, farming will be lost. And what is second part of the question asked? Second part of the question is asking here what? Why is mining considered hazard? So you have to explain the hazard. Everything health and everything accidental, sometimes mine accidents also occurs there. So explain the remedial measure required to reduce the hazard due to mining. So you have sometimes, you know, mining accidents, accidental deaths, then, you know, land subsidence. These are all hazards. Wherever the mining comes, the subsidence could be happening there. Now remedial measures. The first thing in this one you have to write is the indirect question, EIA, in water impact assessment. In water impact assessment of any type of mining project that is done. But what is here? You have an EIA report. Now comes here compliance, strict compliance of EIA report. जो EIA रिपोर्ट बनता है किसी माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए, अप्रूवल दिया जाता है, तो उसका मॉनिटरिंग, कंप्लायंस, देन अगेन व्हाट फ्रॉम हियर, द मॉनिटरिंग पार्ट, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, कितना लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स हैं वहाँ एयर में, वाटर में, लैंड,
में जो है monitoring of the hazardous pollutants, level of toxicity. That again comes part of EIA study, environmental impact assessment. Then again here what? Then another thing, there is deforestation, what we are doing that. Right, again we have to take some kind of green measures there. After mining is done, green measures, that means we should do the plantation of trees around that area. Mining हो जाने के बाद जो areas है, again we have to change that part, what is called something called management of that area with the water bodies or surface water, or let's say for example there planting of trees, greenery around that, not allow the spread of the dust and the particulate matter and the gases to the area there, creating a buffer zone, time to time people should be made aware, right, all those kind of things. Right, these all things which can be done. What is very important, the remedial measure comes from. Then use of technology which will cause less kind of spread of the pollutants. Right, now when we do the dump yard, when we do the mining dumping areas, then what happens? They spread to the far area, from the hill of the mining area, mine hill which is discharged there. Again, some kind of measures to cover that area, not to go to the water bodies or in the spread in the air. All this has to be put in the answer writing. Now the fifth question which has been asked in the exam, right, that is on the Paris Agreement. Write a review on India's climate commitment under the Paris Agreement 2015, India's commitment, and mention how these have been further strengthened in COP26 Glasgow Summit, and then how the first India's national determined contribution has been updated in 2022. It's a very simple question, direct question. And I've been teaching all this in my classroom, Kyoto Protocol and Paris Agreement, I have gone into that. So what is first thing here? This Paris Agreement, first you have to talk about COP, this one, UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. Landmark Convention on Climate Change. Kyoto was earlier, and Paris started in 2021 to 2030, that first phase is going on. So here, what do you have to say? COP21, Conference of Parties 21st, that is 2015, Paris, when it was brought there. So what is first thing here? That countries NDC, nationally determined contributions, which are basically targets and goals. And you have to write from India's perspective. During the same time, you know that International Solar Alliance, in terms of solar energy promotion, India has taken that lead there. Then again, India is talking about climate finance. Then India played a very important role in MI, Mission Impossible, but it has to be made possible. So what is there? So this is called Mission Innovation, MI, clean technology. India being one of the founding member of this, India being one of the founding member of International Solar Alliance, Green Grid Initiative. So that you have to write there. So again this innovation, clean technology promotion. And then as it goes, COP26, Conference of Parties 26, that is a Glasgow, 2021, that is called Glasgow Climate Change Summit, UK, right? So what we have done here, India has been very, very much supportive of this in terms of what is something called Green Grid Initiative. One sun, one world, one grid got become Green Grid Initiative. Intercontinental grid of renewable power. India and UK came out with that. Same International Solar Alliance becomes this. India is the headquarter of that, Gurugram, National Institute of Solar Energy. Then again, India's NDC was revised. See here, when you look at Paris Agreement, India's NDC of India, right? You have to write about. The first thing is that we said 33% to 35% reduction of carbon emission by 2030 based on a GDP level intensity. GDP intensity, India would reduce 30 to 35%, that was a COP21. Then India said that 2.5 to 3 billion tons carbon capture by trees and forest, tons by forest carbon capture.
trees and forest. Then India said that cumulative 40% non-fossil based power generation, cumulative 40%. That non-fossil fuel, fossil fuel power generation. Then we had a 450 gigawatt renewable power by 2030. Renewable power. Then in terms of technology transfer, clean technology, and in terms of promotion of the finance and all this one, like we know that electric vehicles and all this were there. But when it comes to Glasgow, COP26, what the question asked, to be revised. There's a revision of India's NDC, that in 2022, India revised what is something called Panchamrit. Panchamrit. 5 goals. And you know that here very important thing is called PM's Life, Prime Minister's Lifestyle for Environment. That mission. And again, Panchamrit, if you look at, so what revision we did there? So what revision India has did that? Earlier 35%, we revised to 45%. Based on GDP intensity, reduction of carbon. So if you look at now, India's part of it, so revised NDC of India, so that you can have to write here. What we call Panchamrit. The first thing is that India revised to 45% reduction of emission based on GDP intensity by 2030. Then India has kept 500 gigawatt renewable power, solar, wind, biomass by 2030. Half of this we have already met. Then this one, 40% from non-fossil fuel, cumulative power from, because today thermal power plant we are reducing, solar and all we are increasing there. Cumulative power from non-fossil fuel power generation. Then you know that another Panchamrit, 2.5 to 3 billion tons carbon capture. Carbon dioxide capture from forest. We have Green India mission on this by trees and forest. And then you know the lifestyle change, that is a PM Life mission. Many such kind of things have been brought, right? India has not signed the methane pledge, like a methane, because it's very difficult right now. We can switch over to those agriculture, but India is trying there. From paddy cultivation to other kind of crop diversification, India is looking into that. Electric vehicle program, right? Other clean technology program, India is making that kind of headway. So what is you find here? This question is a very direct question here. This is a very direct question. Even this you can link with the environment part. Why is maritime security vital? Security question, India sees trade. IR security part, maritime coastal security challenges. One can write about that. But you can have even technological innovative aspect comes everywhere. So if you look at, I will now revise my questions here. अब अगर मैं अब क्वेश्चन पे आऊं यहां पर कि अगर हम ब्रेकअप की बात करें तो अगर हम माइनिंग वाला भी पार्ट को रख लें तो ये 5 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन इन एनवायरमेंट, राइट, 4 क्वेश्चन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 4 क्वेश्चन सिक्योरिटी, तो नाउ दिस विल बिकम 7 and 0 question on disaster management. So now you can see how the pattern of the GS3 paper have changed this year. So now slowly economic question being reduced, science take. See 5 plus 4, 9. Disaster management, if you look at 10, 12, so half of the paper are based on this. Climate change based questions are there. 2, 3 questions are linked to climate change environment. So that is what you have here. So what I'll do here, since I have covered all this explanation part of questions there, so I will now invite Ajeet sir to talk about internal security questions. Right? So now Ajeet sir will come and take the part of the areas of the security part of it. So this is what the analysis you are getting there.
right? I'll just ask sir to come. So, hello everyone. So, exactly we are talking about the GS3 analysis completely. And you people have seen that GS3 paper this year exactly have been changed, right? A little bit change, not a drastic change, you can say. Exactly, if you analyze according to my analysis, right? Analysis GS3 paper. Okay. So in this regard, it's on, sir. It's on. It's on. Okay. So in this paper, according to my analysis, you will find that in GS3 paper in 2025, the static portion is asked, but in the dynamic nature. Getting my point? इसका मीन्स अगर आप थ्योरी करते हैं या थ्योरी आपने पढ़ी हो तो और अगर आप उसे कह सकते हैं कि करंट अफेयर से मतलब एसोसिएट करके नहीं पढ़ते हैं, देयर वुड बी प्रॉब्लम. ओके, व्हाई? बिकॉज सम क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड व्हिच इज टोटली asking the current affair. Okay, apart from this paper is all about current affairs. Why? Because this year economy got the heavyweight. इकोनॉमी गॉट द हैवी वेट, मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इकोनॉमी के आए हैं. मतलब अगर एनालाइज करके देखें तो 7 या 8 क्वेश्चन इकोनॉमी के हैं, और जो कुछ अलग क्वेश्चंस है इट इज़ टोटली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑल्सो. ओके, एंड इन सारे क्वेश्चंस में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस का डिमांड इस बार हुआ है, इट्स लाइक कि गवर्नमेंट मेजर्स एंड इनिशिएटिव्स के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, राइट? So already sir have been taken the session related to this whole GS3 paper. So I would be talking about more the analysis of internal security this year. Analysis of internal security. So I'm going to have a short discussion on that internal security, right? और इस internal security पे जो important segment बनकर उभरा है, right? तो आप देखेंगे इस साल इंटरनल सिक्योरिटी का जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है. और स्टैटिक बेस्ड का मतलब ये नहीं है कि केवल दे पीपल आर आस्किंग एंड सीकिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वट एवर यू हैव मीन्स राइट रीडिंग इन योर हाउस इन द बुक. द स्टैटिक पोर्सन विथ एसोसिएटेड विद द डायनामिज्म, राइट? तो इट वुड बी क्रिएटिंग द डायनेमिक पोर्सन ऑल्सो. लाइक if you see in internal security portion, this year 4 questions have been asked, right? इन 4 क्वेश्चंस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये 3 क्वेश्चंस डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कह सकते हैं आप. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, राइट? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है. मतलब दे पीपल आर आस्किंग अबाउट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, दे पीपल आर आस्किंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म एंड इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड टू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट. एग्जैक्टली. सो अगर इन 3 क्वेश्चन में देखें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होने के पीछे मैं एक लॉजिक बताता हूं. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में इस साल जो कह सकते हैं क्वेश्चन या टेल वर्ड होते हैं ना, ये टेल वर्ड्स लाइक आपने बहुत अपने आंसर राइटिंग सेशन में ये जब किया होगा टेल वर्ड के बारे पे, तो आपने देखा होगा क्रिटिकली एनालाइज, राइट? क्रिटिकली एनालाइज, राइट? इल्यूसिडेट, right? Discuss.
दे हैव नॉट आस्क्ड दिस ईयर। मतलब यूपीएससी ने इतना, मतलब इस बार इंटरनल सिक्योरिटी इतना आसान दिया था कि आप कह सकते हैं जब हम इंटरनल सिक्योरिटी व्हेन आई वाज टीचिंग इन द हाउस, राइट, टीचिंग इन द क्लासरूम, सो जो पढ़ाया है वही आ गया है। क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं इंटरनल सिक्योरिटी को, राइट, आईएएस लिख देता हूं, इंटरनल सिक्योरिटी को हम हमेशा करंट अफेयर से एसोसिएट करके पढ़ाते हैं। इसका मतलब हमने जब अपना लेक्चर स्टार्ट किया था तो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो, टेररिज्म हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें हमने न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है उसकी कटिंग रख करके, बता करके, मतलब ऐसे दिखा करके बताई थी कि इस बार इंटरनल सिक्योरिटी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकता है। एंड दिस वाज वेरी सिंपल, राइट। ये कह सकते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी में जो हम वीकली असाइनमेंट देते हैं उससे क्वेश्चन आ गए, और हम क्या कोई भी, मतलब इतना इंटरनल सिक्योरिटी बहुत इजी था। लेकिन एक क्वेश्चन जो इसका है इंटरनल सिक्योरिटी का, इट वाज लिटिल डिस्टर्बिंग। मतलब आप ये समझिए इंटरनल सिक्योरिटी पे जो एक नया टाइप का क्वेश्चन पूछा इन्होंने, मैरीटाइम सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन, मैरीटाइम सिक्योरिटी। और मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड भी अगर स्पेसिफिक देखें तो ये सी ट्रेड की बात करते हैं, राइट, सी ट्रेड का। और जो आपने देखा होगा क्या बोलते हैं, हाउदी अटैक हुआ था रेड सी पे, हाउदी अटैक, राइट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। और इसलिए ये न्यूज में आने के कारण ये इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है इंटरनल सिक्योरिटी का। सो ओवरऑल अगर आप एनालिसिस देखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी क्वेश्चंस का, तो यू विल फाइंड देयर आर 4 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन आर डायरेक्टली आस्क्ड। लेकिन इसमें हम अगर इफ वी आर नॉट पुटिंग द करंट अफेयर्स एंड करंट डेटा एंड गवर्नमेंट मेजर्स, दैट वी आर फेलिंग टू दीज सिंपल क्वेश्चंस। ये तो मतलब कह सकते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स है, बट थोड़ा सा एफर्ट करंट अफेयर्स के लगाना पड़ेगा। लेकिन एक जो क्वेश्चन है, इट्स ओवरलैपिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन, ओवरलैपिंग ऑफ GS1 सिलेबस टू GS3, GS1 से GS3 में ये रिलेट करता है। इसका मतलब अगर GS1 का एक मतलब पोर्शन देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने एक सेगमेंट पढ़ा था स्टार्ट में, जब वर्ल्ड हिस्ट्री का जब इंट्रो लेक्चर होता है कि हिस्ट्री क्या है उसके बाद का, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक पढ़ते हैं हम सिल्क रूट। और इस सिल्क रूट को कनेक्ट करने के लिए हमने नदन पाथ बनाया था, सदन पाथ। सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सदन पाथ रिलेटेड, सदन पाथ कह सकते हैं या साउथ पाथ बोल सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है जो रेड सी से होते हुए यूरोपियन ट्रेड को बढ़ावा देता था। अब ये जो सदर्न पाथ है वहां पे हाउदी का अटैक हुआ जिसने इंडिया के सी ट्रेड को इंपैक्ट किया है। अब ये क्वेश्चन का डिमांड है। सो लेट्स कम एंड वॉच द क्वेश्चंस, राइट। Okay, so if you see this paper exactly, right, so हम क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं इसमें, और क्वेश्चन नंबर 9 में भी स्पेसिफिकली हम जो डील करेंगे, ये क्वेश्चन है टेररिज्म इज अ ग्लोबल स्करेज, हाउ हैज इट मैनिफेस्टेड इन इंडिया। तो पहला एक तो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन कंप्रीहेंशन की बात करें तो क्वेश्चन पूछ रहा है टेररिज्म क्या है, और कह सकते हैं ये एक वैश्विक महाविपत्ति है, मतलब टेररिज्म ग्लोबल प्रॉब्लम है, सिंपल। एंड सेकंड क्वेश्चन, टेररिज्म का कौन सा पोर्शन अभी करंट मतलब स्फेयर पे मैनिफेस्ट हुआ है, मतलब इंडिया में कौन कौन सा टेररिज्म आया है और देखने को कौन सा टेररिस्ट अटैक देखने को मिला है। एलोबरेट विद द कंटेम्पररी एग्जाम्पल, ये हो गया आपका करंट अफेयर, राइट। एंड व्हाट आर द काउंटर मेजर्स अडॉप्टेड बाय द स्टेट। सो जब हम पढ़ा रहे थे क्लास में और इसी चीज को जब हम बता रहे थे, तो इसका जो पहला मैंने न्यूज आर्टिकल बताया था, दिस न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू 21 सितंबर 2024, एकदम 21 सितंबर 2024 को exactly India has seized the significant amounts from the proscribed terrorist FATF की रिपोर्ट। अब इसमें जो डेटा दिया है, वो कैसा दिया है, देखिए इसमें जो डेटा दे रहा है क्या देता है, इसमें दे रहा है द फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स विच एडजस्टेड इंडिया टू हैव अटेन्ड हाई लेवल टेक्निकल कंप्लायंस अक्रॉस ऑल इट्स रिकमेंडेशंस।
देखिए मतलब प्रश्न की गंभीरता समझिए कि दे पीपल आर आस्किंग टेररिज्म, और ये द हिंदू का न्यूज है। सो इफ यू आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको टेररिज्म क्या है, स्टैटिक डायनेमिज्म क्या है उसका, स्टैटिक पोर्शन में टेररिज्म कितने प्रकार के हैं, इंडिया में कौन कौन सा टेररिस्ट अटैक हुआ है, ये तो पता चल जाएगा। लेकिन जो 2024 के जो लेटेस्ट और चैलेंज बन करके उभरे इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी पे, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। तो अब इस प्रॉब्लम से रिलेटेड करंट अफेयर को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब दे हैव आस्क्ड द static and theory portion, but with this theory you have to read all the newspaper and current affair materials। मतलब अगर आप देखेंगे तो ये तो किसी मैगजीन से भी हो जाएगा। मतलब इंटरनल सिक्योरिटी का जो क्वेश्चन है वो एक तरीके का इजी क्वेश्चन है इसमें, राइट। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन है व्हाट इज MHA's प्लान फॉर द प्रपोज्ड नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी। तो जब इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे तो हमको ये लिखना ही पड़ेगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो टेररिज्म से लड़ने के लिए क्या है, नेशनल काउंटर फॉर टेररिज्म मींस पॉलिसी लेके आ रहा है। तो पहला मेजर तो ये हो गया, राइट। जैसे इसमें पूछा ना, द काउंटर टेररिज्म मेजर, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइडेड टू हैव दिस काउंटर टेररिज्म। मतलब आई हैव टेकन दिस नोट्स, एग्जैक्टली दिस नोट्स इज टेकन फ्रॉम वट एवर मटेरियल आई हैव टॉट इन द क्लासरूम। तो इसमें जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, टेररिज्म से रिलेटेड है। एट द सेम टाइम इंडिया में क्या मैनिफेस्टेशन है, अब मैनिफेस्टेशन के साथ साथ आपको बताना है कि गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं टू कर्ब द टेररिज्म। तो पहला इनिशिएटिव तो ये हो गया, और पहले इनिशिएटिव में नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी हम बना रहे हैं। इस नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी में हम क्या करने वाले हैं, 2-3 बात आपको लिखनी पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द नेचर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, एग्जैक्टली। ओके, अगर आप देखें, मतलब अगर मैं बोलूं कि इस क्वेश्चन के लिए आपका सिनॉप्सिस क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए आपको आंसर क्या लिखना है, तो सबसे बेहतरीन आंसर, मतलब अगर आप इंट्रोडक्शन में लिखना चाहें तो पहला इंट्रोडक्शन में यू हैव टू राइट 2-3 मेथड है। पहला मेथड है सिंपली डिफाइन टेररिज्म, ठीक है, क्योंकि दे हैव आस्क्ड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टेररिज्म एग्जैक्टली। तो पहले डिफाइन कर दीजिए, और अगर डिफाइन करने के पहले आप किसी का कोटेशन लिख पाए, जैसे आप कोटेशन लिख सकते हैं महात्मा गांधी का, ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं व्लादिमीर पुतिन का, राइट, जैसे आप लिख सकते हैं आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का, राइट। तो अगर आप ये लिखते हैं तो दैट वुड बी एच फॉर यू, डॉक्टर मनमोहन सिंह का। तो टेररिज्म क्या है अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, एक लाइन अगर आप लिख देंगे तो आपको इंट्रोडक्शन में एस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है। सभी टॉपर्स क्या लिखेंगे, मतलब सभी मेंस लिखने वाले क्या लिखेंगे, जनरल पर्सपेक्टिव में ही आंसर इसका होगा। या इंट्रोडक्शन में लोग लिखेंगे टेररिज्म ऐसा होता है, टेररिज्म के ये इम्पैक्ट है, बस। लेकिन अगर इफ यू आर राइटिंग द कोटेशन या कोट्स, राइट, नॉट कोटेशन, इट्स कोट्स, तो महात्मा गांधी, व्लादिमीर पुतिन एंड सर मनमोहन सिंह किसी एक का अगर आप कोट लिख देंगे दैट वुड बी एच फॉर यू, 1 नंबर आपको एग्जामिनर एक्स्ट्रा दे देगा, राइट। इसके अलावा अगर आप चाहें तो वन फेमस पर्सनालिटी डैन ब्राउन को लिख सकते हो, राइट, डैन ब्राउन का कोट लिख सकते हो। तो यहां से इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद बॉडी में क्या लिखेंगे, अगर इसी क्वेश्चन की बॉडी लिखनी है तो पहला तो जो लिखा हुआ है क्वेश्चन पहला लिखना पड़ेगा। जैसे अगर आप क्वेश्चन देखें राइट, दिस क्वेश्चन क्या है, टेररिज्म इज अ ग्लोबल स्कर्ज, ओके, स्कर्ज एंड मैनिफेस्टेड इन इंडिया। और दूसरा कंटेम्परेरी एग्जांपल्स लिखना है और काउंटर मेजर्स लिखना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, इफ यू want to write your answer comprehensively, first you have to write terrorism as a global scourge, and number 2 manifestation in India, and number 3 contemporary examples देना है, and number 4 countermeasures adopted by the state. For this purpose you have to write number 1 is manifestation in India. A manifestation में
हमको पता है कि साइबर टेररिज्म है, और फिर हमने बहुत सारे क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल टेररिज्म भी स्टार्ट किया, कोविड भी गया, है ना। तो ये तो लिखेगा ही, हर कोई लिखेगा, लेकिन व्हाट यू हैव टू राइट द रीसेंट फिनोमेना एंड काउंटर या कंटेम्पररी टेररिज्म रिलेटेड इशूज। जैसे मैं आपको बताता हूं, पहला जो सबसे है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, राइट। और इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में जो सबसे पहला हमको लिखना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा पुलवामा, राइट। पुलवामा लिखेंगे, और जब आप पुलवामा लिखोगे, ठीक है, तो आप पहलगाम कैसे छोड़ सकते हो, तो पहलगाम डाल सकते हैं, राइट। और इसी पहलगाम के बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया था, ठीक है, तो सिविलियंस को उन्होंने मार दिया था, राइट। फिर उसके बाद एक दूसरा जो पार्ट है, दिस इज द पोर्शन ऑफ टेररिज्म। तो हमारे यहाँ जो टेररिज्म है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बिहाफ पे भी काम करता है, या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी एक टेररिज्म का पोर्शन हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं, अगर आप देखेंगे 60 to 70 kg ऑफ IED, राइट, IED, राइट, 60 to 70 kg IED, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। और इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस का प्रयोग करके इन्होंने क्या किया था, विस्फोट किया था। और दिस विस्फोट, दिस 60-70 kg विस्फोट led the death of DRG personals, राइट। सो ये कंटेम्परेरी हुआ ना, ये कंटेम्परेरी हुआ ना, ये कंटेम्परेरी हुआ ना। So they people are asking, means UPSC is asking contemporary issues, and you have to write the manifestation of terrorism in India in the contemporary manner. Means you have to write the correct dynamic and current affair portion of the terrorism. Okay. फिर इसके अलावा आपने देखा होगा कि गुजरात गवर्नमेंट साइट में एक DDoS अटैक हुआ था, राइट। इसका मतलब मैनिफेस्टेशन इन इंडिया ऑफ टेररिज्म इज साइबर टेररिज्म, राइट, साइबर टेररिज्म। And this cyber terrorism exactly what just happened, cyber terrorism के लिए क्या किया आपने देखा होगा, NIA, ये न्यूज में भी था, राइट। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये फाइंड किया कि गुजरात की गवर्नमेंट साइट में, गुजरात की गवर्नमेंट साइट्स में, साइट में, ठीक है, गवर्नमेंट साइट में DDoS अटैक हुआ, DDoS अटैक। DDoS अटैक क्या होता है? दिस इज द टाइप ऑफ साइबर टेररिज्म, सब जानते हैं, एवरीवन इज राइटिंग साइबर टेररिज्म, बट व्हाट इज रिसेंट वन इज DDoS, DDoS attack in the Gujarat government site. And what is the DDoS? DDoS is disturbed denial of services, disturbed denial of services, disturbed denial of services. If you are writing this, you are getting extra edge into this question. Okay, DDoS क्या होता है exactly? DDoS होता है, क्या बोल सकते हैं, इसमें एक बॉटनर होता है ना, बॉट देखा होगा आपने, टेलीग्राम बॉट, तो एक बॉटनर होता है, और ये जो बॉट होता है उनको 1 सेकेंड में 1000 रिक्वेस्ट भेज देता है, राइट, जिसके वजह से साइट में आपने देखा होगा हैंग करने के रुक जाते हैं। तो गवर्नमेंट साइट को रोक देना, इट्स वन ऑफ द मेजर साइबर टेररिज्म, द एग्जाम्पल। ओके, एग्जैक्टली। एक और चीज आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वाला पोर्शन है, इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में 2023 पे, कभी सर 2023 नहीं, 370 के जो रिवोक हुआ था ना, 370 रिवोकमेंट के बाद, राइट, आफ्टर 370 रिवोकमेंट, वन ग्रुप, द रेजिस्टेंट फ्रंट, TRF, है ना, द रेजिस्टेंट फ्रंट को हमने 2023 पे इसे क्या कर दिया था, मतलब टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया था। एंड जो TRF है वो किसके अंदर काम करता है, ये काम करता है लश्कर-ए-तैयबा के अंदर, और लश्कर-ए-तैयबा का किसी टेररिस्ट अटैक में नाम ना आए इसलिए ये TRF काम करता है, द रेजिस्टेंट फ्रंट। अंडरस्टूड? सो अगर आप ये लिखेंगे यू विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा मार्क्स,
एक्स्ट्रा 10 मार्क्स से क्या ही एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन जहां पे आपको 4 नंबर मिल रहा होगा वहां पे 5 या 6 नंबर या 7 नंबर तक भी जा सकते हैं। इतना बेहतरीन ये पेपर था या इतना बेहतरीन ये क्वेश्चन था। ओके, ये लिख सकते हैं मैनिफेस्टेशन, एंड और भी मैनिफेस्टेशन जो आप बुक से स्टैटिक से करते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा इस मैनिफेस्टेशन के बाद जो हमने स्टेट काउंटर टेररिज्म के लिए, मतलब स्टेट ने क्या काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म अपनाया है, काउंटर टेरर मैकेनिज्म, राइट, या फिर पॉलिसी कह सकते हो, मैकेनिज्म और या पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं टू काउंटर द टेररिज्म। तो नंबर 1 जो है वो है काइनेटिक रिस्पॉन्स। इट वॉज इन द न्यूज, काइनेटिक रिस्पॉन्स। और वो जो मैं आपको न्यूज़पेपर कटिंग दिखा रहा था या स्नैप दिखा रहा था द हिंदू की, एग्जैक्टली इन दैट न्यूज़पेपर काइनेटिक रिस्पॉन्स हैव बीन मेंशन्ड, एंड दिस काइनेटिक रिस्पॉन्स इज नथिंग, आपने सुना होगा नाम, ऑपरेशन महादेव, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू आर नॉट राइटिंग ऑपरेशन महादेव, इट मीन्स you are lagging behind or some of the marks to become a topper. So in kinetic response, government started responding as in the name of Operation Mahadev, right? And this Operation Mahadev, exactly Operation Mahadev चलाया था। फिर उसके बाद एक हमने large scale drills की, आपने सुना होगा अभी हमने किया था जब ये अटैक हुआ था, वी वर ट्राइंग टू डू स्ट्राइक, राइट, ओवर पाकिस्तान टेररिस्ट हब्स। सो लार्ज स्केल ड्रिल्स किया था, और इस लार्ज स्केल ड्रिल्स को हमने ऑपरेशन अभ्यास के नाम से जाना था, ऑपरेशन अभ्यास। सो इफ यू आर राइटिंग ऑपरेशन अभ्यास, यू आर गेटिंग एस डेफिनेटली, राइट, ऑपरेशन अभ्यास, ठीक है। और ये जो ऑपरेशन अभ्यास हुआ था, दिस वाज हैपेंड इन 244 डिस्ट्रिक्ट, 244 डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन अभ्यास किया गया था। सो दिस बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। सो द फर्स्ट स्टेट काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म एंड पॉलिसी, द काइनेटिक रिस्पॉन्स। नंबर टू काइनेटिक रिस्पॉन्स के बाद जो नंबर 2 आता है वो आता है स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन, strategic coordination, and under this strategic coordination exactly एनएसजी का नाम सुना होगा आपने, और सुना क्या, आप मेंस दिए हैं इसका मतलब आपने पढ़ा होगा, लेकिन राइटिंग एनएसजी, only एनएसजी राइटिंग इज नॉट सफिशिएंट फॉर दिस पर्पस। सो स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन में एनएसजी क्या करता है, इसने पहली इस एसओपी स्ट्रेटेजी बनाई, द फर्स्ट एवर एसओपी स्ट्रेटेजी। यू हैव टू राइट अबाउट दिस एसओपी स्ट्रेटेजी। नंबर 3, मैं आपको 3 बताऊंगा, आपको 5 लिखना है, तो 2 आप थ्योरी पार्ट से भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 ये डायनेमिक पोर्शन है, कंटेम्पररी इश्यूज है। फिर तीसरा है डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन। डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन, जहां पे भी डिप्लोमेटिक आता है, इट्स अबाउट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, राइट। सो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने क्या किया, 5 स्ट्रेटेजिक पॉइंट बनाया। सो यू हैव टू राइट द 5 स्ट्रेटेजिक पॉइंट, 5 strategic point. Okay, and what is this 5 strategic point? In this 5 strategic point strategy, you have to write it included like intelligence, intelligence cooperations. Number 2, proactive strikes. Number 3, counter radicalization, and number 4, involving global partner to curb the terrorism. So this means like this you can write this answer in 150 word, and this is very easy. So static तो है लेकिन dynamism उसके साथ है, right? So this was the first question. Now let's come to the other question, right? And one more thing. In this news, the thing was mentioned, all state union territories should have the uniform specialized terrorist unit, है ना? तो एक ये भी लिख सकते हो, यूनिफॉर्म स्पेशलाइज्ड टेररिस्ट यूनिट, ठीक है, विथ प्रॉपर स्ट्रेंथ, ठीक है, प्रिजन मॉनिटरिंग यूनिट, लैंग्वेज एक्सपर्ट यूनिट,
ठीक है, डी रेडिकलाइजेशन यूनिट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ऑल अपग्रेडेड weapons, this is very essential for essential to counter terrorism. And number third is national counter terrorism policy. You have to write, मैंने आपको ये पहले स्टार्ट होने से पहले बताया था, नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किया था. एंड मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने जब ये एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस ATC को एड्रेस कर रहे थे, तब इन्होंने ये बोला था कि वी आर गोइंग टू एंड वी आर प्लानिंग टू हैव द नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी. एंड दिस वाज इन द न्यूज़ ऑफ द हिंदू. So I have given you the snip of November 29 and 2024. So सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगर आप हिंदू को फॉलो करते हो या किसी भी न्यूज़पेपर को फॉलो करते हो, you will be gaining more marks. Okay? Now, the other question is, the government of India recently stated that left-wing extremism will eliminated by 2026. आप ये समझिए कि अमित शाह जब क्या बोलते हैं रायपुर में कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने कॉन्फिडेंटली बोला था बाय 2026 वी आर गोइंग टू मेक छत्तीसगढ़ फ्री फ्रॉम द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. सो इतना कॉन्फिडेंस क्यों आया? दिस इज द पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिज्म को बढ़ावा देता है. Therefore, this news, this topic became essential for 2024 mains, 25 mains. And by this question, you can understand the relevancy of the newspaper and the statement given by the prominent offices of the country. And one of the prominent offices is the Ministry of Home Affairs this time. दो तीन ही लोग तो हैं, प्राइम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एंड श्री अमित शाह सिंह मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स. अगर इन्होंने कुछ बोला है एंड दिस speak is related to the left wing extremism, internal security, governance, so this became very important. So this year also in 2026, if you are going to appear, this would become very important for this purpose. So the question, government of India recently stated that left wing extremism will be eliminated by 2026. ये कहा है, ये reference है इस question का. So what do you understand by, once again, no question tail words is there, very straightforward question, but in the dynamism concept. Okay, so do you understand by LWE and how are the people affected by it? People affected by it, what measures have been taken by the government to eliminate LWE? नीरज सर ने भी बताया, मैंने भी बताया कि this question was totally all about the government measures, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी, चाहे वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो, चाहे वो क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो. अब डिजास्टर मैनेजमेंट तो आया नहीं, लेकिन अगर आता तो डेफिनेटली वो डिजास्टर मैनेजमेंट में गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ज़्यादा बढ़ चढ़ के पूछ रहे होते, राइट. सो इन इंटरनल सिक्योरिटी ऑल्सो UPSC have been asked related to what measures have been taken by the government to eliminate LWE. राइट, एंड दिस इज द न्यूज रेफरेंस जिसके वजह से ये बना था. नाउ जब हम पढ़ा रहे थे LWE, तो एक और इंपॉर्टेंट बात, द हिंदू बस पढ़ने से नहीं होगा. द हिंदू तो आप पढ़ लोगे कि एक रेफरेंस है, एक न्यूज है. एट द सेम टाइम यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स ऑफ द PIB, एंड दिस इज द स्नैप ऑफ द PIB. और क्या है? यूनियन होम मिनिस्टर and Minister of Cooperation addresses the press conference on the left-wing extremism in Raipur. And Raipur, छत्तीसगढ़, and छत्तीसगढ़ में LWE बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है. अब देखो, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कैसे पीपल आर अफेक्टेड एंड व्हाट आर द गवर्नमेंट मेजर्स, इंपैक्ट ऑन पीपल एंड गवर्नमेंट मेजर्स. यही दो क्वेश्चन है, कंप्रिहेंड आपको करना है आंसर. तो अब इसका ये जो PIB का है वो केवल हेडलाइन है. अब देखिए इसका इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन. अब इस इंटरनल पोर्शन में देखोगे तो मैं आपको डायरेक्टली ले जाता हूं कहां पे, राइट, इन दिस पोर्शन, राइट. Amit Shah stated that Modi worked confidence among the people development of ideology, left-wing extremism. Union Home Minister said that left-wing LWE is the biggest challenge before the democratic system. तो पहला impact क्या होगा? LWE is impacting on the democratic governance system of the country. तो पहला impact तो ये हो गया. Number 2, Modi government has taken left-wing extremism challenges as a challenges इन्होंने लिया and committed to eradicate problem from the country. अब इन्होंने बोला
गवर्नमेंट इनिशिएटिव में एक और बात आप लिख सकते हो यहाँ पे देखो लिखा है यूनियन होम मिनिस्टर कॉल्ड अपन यूथ इन्वॉल्व्ड इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म टू सन वायलेंस एंड जॉइन द मेघालय ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बिंग बिग प्राइम मिनिस्टर मोदी, राइट। तो इसी सेंटेंस में आपको एक इंपैक्ट मिल गया, आपको एक सॉल्यूशन मिल गया कि आप यूथ को बोल रहे हैं डियर यूथ you come and join and leave the LWE side, right? So this is the one in this sentence they have given one impact and they have given the initiative taken by the government. Apart from this, Sri Amit Shah said that Modi government is moving ahead with the brief development sending the ideology LWE and bridge the gap of lack of development. किसके वजह से LWE आ रहा है? क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है, और डेवलपमेंट नहीं है इसलिए LWE हो भी रहा है, और डेवलपमेंट नहीं था इसलिए LWE का इमरजेंस भी हुआ था। ओके, अब यहां पे देखिए यूनियन होम मिनिस्टर कोऑपरेशन इन 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम 4 decades द मेंबर ऑफ डेथ ड्यू टू लेफ्ट वायलेंस हैव बीन कम डाउन बिलो 100। मतलब LWE अटैक की वजह से ये जो डेथ है वो पहली बार कम हुआ है। ये किसने बोला है? अमित शाह जी ने बोला है। एंड have been reported between 2022 Amit Shah began death was recorded in 2010 1005 death was recorded in 2010 at 1005 और ये कितना हो गया 2023 पे, मतलब 138। तो इफ यू आर राइटिंग कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, तो इन इंट्रोडक्शन के बाद एक दो लाइन आपको ये फैक्ट्स एंड डेटा डाल देना है, एंड फॉर दिस पर्पस यू हैव टू रीड द PIB न्यूज एनालिसिस एट द सेम टाइम while you are reading the Hindu and Indian Express or whatever newspaper you are reading. So you cannot stick only to the newspaper, but you can gain marks from the newspaper. Lekin if you want to become the single digit ranker, you have to put this PIB sources and PRSS sources for mains answer writing purpose, and at the same time you have to do Kurukshetra Yojana if the specific problem related to the particular discipline is coming, right? So this became very important. And apart from this, Amit Shah Bharatiya Battalion said that Bharatiya Battalion was raised in CRPS in 2017. What is the solution? UPSC is the job to solve the problem, not to tell about कि this is the problem and this is the challenges related to LWE और छोड़ दिया क्वेश्चन। नहीं, you have to write way forward. वे फॉरवर्ड लिखेंगे, हो सकता है सॉल्यूशन लिखेंगे, तो वे फॉरवर्ड क्या लिखेंगे? तो पहला CRPF जवानों को बढ़ा दो, तो क्या लिखे अमित शाह जी ने क्या बोला? भारतीय बटालियन वाज रेज्ड इन CRPF इन 2070 इन विच ऑल जवान्स वर फ्रॉम द बस्तर रीजन। बस्तर रीजन से हमने जवान लिया, इसका मतलब जो बस्तर है वो प्रोन रीजन है, और वहां से हमने यूथ को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में डाल दिया CRPF में। वन सॉल्यूशन। Okay, apart from this, approval from the 400 tribal soldiers from दंतेवाड़ा, सुकमा एंड बीजापुर। इसका मतलब आप समझिए LWE और गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, एक तरफ उस पर डायरेक्ट स्ट्राइक भी कर रही है और एक तरफ उस रीजन के यूथ को सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट जॉब में एंगेज कर रही है। वेयर देयर इज एम्प्लॉयमेंट देयर वुड बी नो पॉवर्टी, एंड वेयर देयर इज नो पॉवर्टी देयर इज नो चांस ऑफ टेररिज्म, क्राइम एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड नक्सलिज्म, एनीथिंग। तो सॉल्यूशन देखिए, एक तरफ बोलती है मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों टाइप के इनिशिएटिव। सो यू हैव टू राइट दिस, एंड वंस यू गेट इनटू दिस PIB न्यूज यू विल बी गेटिंग हाउ टू राइट दिस आंसर इन अ best manner so that you could gain 7 to 8 marks, which is very maximum I'm hypothetically talking about. But if you are writing this type of answer, you can gain also, you can seek this also. Okay, now let's come to the other slide. Other slide फिर से एक बार न्यूज थी अक्टूबर 2024 पे, therefore it became very important. Left wing extremism is on its last legs, says Amit Shah at review meet. अब वहां पे उन्होंने रायपुर में वो किया, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने एक रिव्यू मीट किया, उसमें भी बोला कि LWE खत्म हो रहा भाई। और इतना ऑप्टिमिज्म क्यों आया? बिकॉज दिस गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कर्ब एंड बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं ताकि LWE और नक्सलाइड प्रोन एरिया पे हम डेवलपमेंट कर सकें और वहां के यूथ को हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में एंगेज कर सकें, सो दैट दे कुड नॉट इन्फ्लुएंस फ्रॉम द LWE एंड द माओइज्म आइडियोलॉजी. So this is the solution also. Okay, apart from this, the other news is of
25 अगस्त 2024। इतने बार न्यूज अगर अक्टूबर में है, अगस्त में है, अगर कोई टॉपिक आ रहा है, इसका मतलब देयर इज मोर चांस of question related to this news headings. Okay, so you can see that how this paper became very relevant of the current affairs module. Okay, right. Now फिर से देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फिर से उन्होंने बोला, ये देखिए, अब देखिए इस वाले लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की पीआईबी न्यूज पे जो 7 फरवरी 2024 पे आई थी, उस पे क्या सोल्यूशन दिया है, इसमें क्या सोल्यूशन दिया है, बहुत बढ़िया सोल्यूशन दिया है। देखिए मैं बताता हूं आपको, ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर बिटवीन 2018 टू 19 एंड 2023 हमने कितने रुपए रिलीज किए हैं भाई, 4931 करोड़, बिग बजट, ठीक है। और ये किसके लिए स्पेसिफिक, कैपेसिटी बिल्डिंग इन द एलडब्ल्यू अफेक्टेड, राइट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दे हैव आस्क्ड, राइट, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, एसआईएस, वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, right, special central assistant schemes. Further 765 crores have been given to the central agency for operating helicopters. Oh, helicopters दिया गया, कितना पैसा दिया गया, ये देखो एसआरई किया हमने, एसआईएस के लिए पैसा दिया, और कितना पैसा दिया, 4931 करोड़, राइट, एंड 765 करोड़ हमने फिर से दिया कि हेलीकॉप्टर से भी ऑपरेट करें, क्योंकि ये एलडब्ल्यू मैक्सिमम फॉरेस्ट रीजन में होता है, जिसकी टेरेन हाई नहीं होती, हाई टेरेन होती है, बहुत डिफिकल्ट होता है पहुंचने में, सो वी कैन ऑपरेट इन एलडब्ल्यू रीजन बाय हेलीकॉप्टर। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट मेजर्स एट द काउंटर एलडब्ल्यू, एड्रेसिंग द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिक्योरिटी कैंप्स, सिक्योरिटी कैंप को हमने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, ठीक है, अंडर असिस्टेंट सेंट्रल एजेंसी फॉर एलडब्ल्यू मैनेजमेंट, ये अकालवेम स्कीम. So these are the government measures already mentioned in the PIB. You have nothing to read more than this, and you can write the good answer related to this question. This is how you can write a good answer. Means you cannot live and you cannot prepare 100%. 100% तो possibility भी नहीं है, क्योंकि समंदर सा syllabus है उसका. लेकिन if you want to prepare maximum to gain high marks, you have to read newspaper, PIB and the magazine. And magazine भी कौन सी? कुरुक्षेत्र and योजना, राइट, रिलेटेड. और फिर मतलब रिवीजन के लिए आप किसी इंस्टीट्यूट का गवर्नमेंट मैगजीन भी कर सकते हैं. बट वी आर डूइंग दिस इन द क्लासरूम ऑल्सो. मतलब आप ये समझ जाइए, ये जो ओल्ड सिस्टम ऑफ टीचिंग था ये खत्म हो गया, बिकॉज द यूपीएससी हैव इवॉल्व्ड द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, राइट. मतलब आप सोच रहे हैं कि एलडब्ल्यू पढ़ा देंगे, इतने टाइप के एलडब्ल्यू है और इसकी ये समस्या है, इसका ये सोल्यूशन है. This is not done yet, boss. You have to see the newspaper. मतलब without newspaper and the current affair news, you cannot write the good answer. Okay. So let's see next. Yeah. Apart from this, we have started Eklavya Model Residential School (EMRS). LWE affected area में 130 approximately 130 एकलव्य स्कूल्स खोला गया. वहाँ पे बच्चों को LWE में ना जाने को मिले या LWE से प्रभावित ना हो. For expansion of road network, माना कितना किलोमीटर रोड, 1 लाख क्या बोलते हैं 13,620 किलोमीटर रूट डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लिया गया है, ठीक है. फिर उसके बाद इम्प्रूव टेलीकॉम कनेक्टिविटी, राइट, टू हैव बीन सैंक्शन्ड टू एलडब्ल्यू अफेक्टेड एरिया. मोर देन 3,700 टावर हैव ऑलरेडी बीन कमीशन सो फार. एंड ये छोटा छोटा सा, ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं, दिस बिकम द मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन एलडब्ल्यूई प्रोन एरिया, right. And apart from this, financial inclusion of local population in W affected area, 4,903 new post office have been established and opened, and further 955 bank branches, 803 ATMs opened in 30 most affected area in April 2015, right. You can see that, right, 2015. So these are the government initiative already mentioned in PIB. So no need to read The Hindu, no need to read other sources or other coaching materials. If you are completing PIB, you can get more marks related to this type of questions, right. And not only in this question, I have checked the science and technology department, and I have checked the environment department. PIB news से ही बहुत सारा question solve हो जा रहा है. So they have asked many questions related to the PIB, okay. And the police station
जो है वो पुलिस स्टेशन को हमने क्या कर दिया है, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशंस की बात की है, 171 पुलिस स्टेशंस अक्रॉस 42 डिस्ट्रिक्ट में 2023 में खोला. डिक्लाइन ऑन द ज्योग्राफिकल स्प्रेड इज आल्सो रिफ्लेक्टेड द रिड्यूस द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कवर्ड अंडर द सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर. एसआरई स्कीम हमने ये किया. फिर उसके बाद एसआरई डिस्ट्रिक्ट रिड्यूस 126 से 90 हमने कम कर दिया इन अप्रैल 2000, फर्दर 70 इन जुलाई 21 में. एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन पीआईबी. ओके, so that's why PIB and the current affair became very relevant for this exam. And this was stated by the Minister of Home Affairs, Sri Nityanand Rai, in written reply questions to the Raj Sabha, in the Raj Sabha. Raj Sabha का ये discussion है. Okay, so what government have government measures and policy related questions. So अगर government policy and measures देखना है तो you have to see the debate of Raj Sabha. Right? Raj Sabha debate नहीं देख पाते हैं, you just go इन द डिपार्टमेंटल साइट इन पीआईबी और आपको बहुत सारा चीज वहां पे मिल जाएगा. सो द सफिशिएंट कंटेंट रिलेटेड टू द दिस. राइट, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए. नॉर्थ ईस्ट, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी एंड पीस प्रोग्रेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. मेजर चैलेंजेस पूछा है इंटरनल सिक्योरिटी का इन नॉर्थ ईस्ट रीजन. एंड मैप द वेरियस पीस अकॉर्ड एग्रीमेंट इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट एंड पास. 100% ये आपका बुक या किसी एक डेफिनेट मटेरियल से हो जाएगा, क्योंकि दे हैव बीन आस्क्ड वेरी स्टैटिक क्वेश्चन. तो ये तीसरा क्वेश्चन है. इस तीसरे क्वेश्चन को मैं क्या ही बताऊं, आपने देखा होगा इस तीसरे क्वेश्चन में जो तीसरा क्वेश्चन है वो एकदम बोडो, ब्रू, कार्बी आंगलांग अकॉर्ड, असम अकॉर्ड, एनएलएफटी अकॉर्ड, एनएससी एन अकॉर्ड, इसको लिस्ट करना है. और उसके बाद आपको गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव एग्रीमेंट क्या था, ये बता सकते हो. और एक छोटा सा वे फॉरवर्ड लिख लो कि इस रीजन में डेवलपमेंट करोगे, पॉवर्टी को कम करोगे, इंक्लूसिव ग्रोथ करोगे, यू विल गेन द सिक्योरिटी इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन. सिंपल, बहुत सिंपल रखना है. ये सिंपल क्वेश्चन है और ये 250 वर्ड का क्वेश्चन है. यू हैव टू राइट इन दिस इनटू द डिटेल. ओके, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा. एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूं. Question number 20, exactly. So this slide is over. The question number 20, if you see, this one, question number 20, this last question. This last question is very tricky. इस पर लिखा है what is the maritime security. ठीक है, तो everyone is thinking initially कि this is totally related to the economy. No boss, it is related to the economy at the international relation, and international relation में भी सबसे important geopolitics. Right? At the same time, this can be associated the GS1 syllabus of world history. जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड हिस्ट्री पे एक सदर्न पाथ था और इस सदर्न पाथ में सऊदी अटैक हुआ और सऊदी अटैक के वजह से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया, आपके एग्जाम में आ गया. अब इसमें क्या करना होता है एग्जैक्टली इन दिस पेपर, राइट? Question number 20, I am going to explain you. Question number 20, and this is the last question. I'm not going to take the more time. Question number 20 अगर आप देखोगे तो सबसे पहली बात, क्या कारण क्या था इस क्वेश्चन का? सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो कारण था इसमें न्यूज, सऊदी अटैक, हाउदी नॉट सऊदी, हाउदी अटैक इन रेड सी रीजन, इन रेड सी रीजन, जिसके वजह से स्टेट ऑफ मलक्का भी इंपैक्ट करता है. और जहां पे स्टेट ऑफ मलक्का और रेड सी पे इंपैक्ट हुआ तो बोथ आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस एंड अफेक्ट द मैरीटाइम ट्रेड. ये मैरीटाइम सिक्योरिटी और सी ट्रेड को इंपैक्ट करेगा, सी ट्रेड को इंपैक्ट करेगा. और इससे मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सी ट्रेड नॉट ओनली इंडिया, बहुत सारी कंट्री होगी, लेकिन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एंड यूपीएससी इज ऑल अबाउट इंडिया. तो इंडिया के सी ट्रेड को इंपैक्ट करता है. गेटिंग पॉइंट? अब जैसे ही कंसर्न्स आते हैं स्टेट ऑफ मलक्का पे, कहां पे आते हैं सर? कंसर्न related to the state of Malacca. So this concern affect the India's maritime security, and this India's maritime security recalled, this India's maritime security is recalled
maritime security is recalled recalled what sir? Recalled maritime cooperation. और इसने किसको बढ़ावा दे दिया? maritime cooperation को बढ़ावा दे दिया. इस वजह से ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन गया. और यू हैव टू राइट इंक्लूडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो. एंड मैरीटाइम कॉपरेशन कैसे? मैरीटाइम कॉपरेशन एग्जैक्टली कैसे? मैरीटाइम कॉपरेशन वाया मैरीटाइम कॉपरेशन, जितना भी हमने सी रिलेटेड कंट्री पे विजिट किया है, वहां पे जो भी सी ट्रेड से रिलेटेड बात हो रहा है, दिस वुड बी इन योर आंसर. Therefore, this became the internal security topic. So, internal security के 3 क्वेश्चन हैं. This is the 4th question and very important and tricky question here. कैसे है? जैसे हमने maritime cooperation को बढ़ाया, कैसे बढ़ाया सर? हमारा आसियान रिलेशन. सो आसियान कंट्रीज से हमारा रिलेशन, राइट. उसके बाद हमने बहुत सारे जॉइंट ड्रिल्स किए, जॉइंट ड्रिल्स रिलेटेड टू द मैरीटाइम सिक्योरिटी. हमने क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लिए, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लिए. स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लाइक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लाइक इसमें आपको डालना पड़ेगा सागर इनिशिएटिव, इसमें आपको डालना पड़ेगा महासागर इनिशिएटिव. So that's how this topic became very relevant, and that's how you can write. Very simple. And apart from these 3 maritime security related initiative taken by the India and other related country to the related to the maritime security and the sea trade related issues. One more thing is important: Indo-Pacific initiative. How come you can forget this? Indo-Pacific initiative. Indo-Pacific इनिशिएटिव. अब देखिए, अब इस आंसर से आपको ये लग रहा होगा कि दिस इज इंटरनेशनल रिलेशन वाला पोर्शन. हाउ कम दे कैन आस्क इन GS3, राइट? दिस इज द सिक्योरिटी क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंटरनेशनल रिलेशंस, डायनेमिज्म एंड द जियोपॉलिटिक्स. दैट्स व्हाई दिस इज द सिक्योरिटी क्वेश्चन, नॉट ओनली रिलेटेड इन द इंटरनेशनल रिलेशन. सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये दिमाग में रखना कि GS1 का सिलेबस है, साइंस एंड टेक अलग है. ये दिमाग में रखना कि इकोनॉमिक है, इकोनॉमी अलग है तो इकोनॉमी ही रिलेटेड. नो, यू हैव टू लर्न दैट हाउ कम यू कैन कनेक्ट ऑल द सिलेबस टू ऑल द सब्जेक्ट रिलेटेड इश्यूज एंड ऑल द GS1, 2, 3 एंड 4 पेपर, राइट. मतलब यहां पे आप समझ लीजिए कि मतलब UPSC आपको एक सीधा एक मैसेज दे रही है भाई कि पढ़ करके रट्टा मार के बात नहीं बनेगी. यू हैव टू राइट डाउन एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एट द सेम टाइम. अंडरस्टूड? गेटिंग अ पॉइंट? सो दिस 4 इनिशिएटिव बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द सी ट्रेड. अब इंडिया इसके लिए एक्सपेंडिंग एंगेजमेंट क्या करता है? इंडियाज एक्सपेंडिंग एंगेजमेंट विद मॉरिशस. अब एक और चीज है इसके अलावा भी, इंडिया का एक्सपेंशन किससे सर? मॉरिशस से. मॉरिशस, ओके. तो इंडियाज एक्सपेंडिंग एंगेजमेंट विद मॉरिशस. अब क्या होता है, इंडिया का जो एक्सपेंशन हुआ है मॉरिशस के साथ, इसने क्या किया? न्यू दिल्ली के रोल को ज्यादा एम्फसाइज कर दिया. बहुत इंपॉर्टेंट वेट इज, मतलब इंडिया के रोल को एम्फसाइज कर दिया. और कैसे कर दिया? इसने इंडियाज रेसिडेंशियल मैरीटाइम को बढ़ावा दे दिया. इंडियाज रेसिडेंशियल मैरीटाइम को इसने क्या कर दिया? प्रमोट कर दिया. गेटिंग पॉइंट? सो दिस इंडिया मॉरिशस एंगेजमेंट विद रिलेटेड टू द सी ट्रेड एंड द मैरीटाइम सिक्योरिटी, इसने न्यू दिल्ली के रोल को एज इंडियाज रेसिडेंशियल मैरीटाइम बहुत एम्फसाइज किया, बहुत ज्यादा इसको स्ट्रेंथन किया. और स्ट्रेंथन करने के साथ इसने बहुत सारी चीजें कर दी. जैसे ही इंडियाज रेसिडेंशियल मैरीटाइम स्ट्रेंथन हुआ तो इसमें एक और चीज होती है. पहला क्या? पहला, बैलेंसिंग China's role, and this balancing China's role in the expanding reach, मतलब चाइना के रोल को मैरीटाइम में कंट्रोल कर दिया. पहला, राइट. नंबर टू is that coordinating partnership, coordination of partnership, and this partnership in the Indo-Pacific region.
region, Indo-Pacific region became very important. Indo-Pacific region became very important. And this Indo-Pacific region पे coordination participation gain करने के बाद तीसरा, the quad role here became very important. Quad role. And quad role, quad ने क्या किया? Quad ने first ever, quad have been first ever, ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सी ऑब्जर्वर मिशन रिलीज करने की बात कही है, राइट? सो दैट्स हाउ वी कैन strengthen our maritime trade boss. So that's how we have completed our for internal security portion. So exactly this is not internal security, while this is related to the maritime security. But overall, the conclusion of GS3 syllabus is that you cannot stick only to the static book. You have to read newspaper, you have to read PIB, you have to have the government magazines like Yojana and Kurukshetra in your preparation time. And the PYQ is going to be the game changer for this purpose. So thank you. So again, I'm calling Neeraj sir. So he will be heading with the session. Okay. कुछ डाउट है, केशव करके लड़का है, तो पेपर 2 हम लोग लेंगे, है ना? पेपर 2 का भी सर का होगा, कुछ दिन में पेपर 2 सर भी लेंगे। और वो कुछ क्वेश्चन यहाँ था कि नॉन स्टेट और स्टेट करके पूछ रहे थे वो। हाँ, नॉन स्टेट एंड स्टेट एक्टर इज वेरी रिलेटेड। नॉन स्टेट एक्टर इज वेरी सिंपल। स्टेट एक्टर मतलब गवर्नमेंट फंड करती है टेररिज्म के लिए, और नॉन स्टेट मतलब इन्होंने अलग से अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए सेपरेट एक डायनेमिज्म उठा रखा है टेररिज्म फैलाने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन है कि टेररिज्म का डेफिनेशन यूएन का लिख सकते हैं क्या? हाँ, वेरी इजी। मतलब दिस इज द वेरी इजी मेथड टू राइटिंग। मैंने ये नहीं कहा कि आपको ये नहीं लिखना है, मैंने बोला कि टेररिज्म को डिफाइन करने के बाद आप एक कर सकते हैं कि महात्मा गांधी, मनमोहन सिंह एंड डैन ब्राउन, इन सब के कोट्स लिख सकते हैं टेररिज्म रिलेटेड, कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं है, टेररिज्म के लिए कोई भी धर्म उसका फ्रेंड नहीं है, दे आर किलिंग ऑल, राइट? हाँ, सो यू कैन राइट यूएन, right? He was saying that NIA 2008. NIA 2008 you can't write because they are asking contemporary one. So you can write NSG 2021. Okay. UAPA, ITPA, BS, अच्छा वही। हाँ, UAPA, हाँ हाँ। फिर इन्होंने, अच्छा वो फिर वो उसमें मेरे में पूछा है। हाँ, आपके क्वेश्चंस है। क्वाड का कुछ पूछ रहे थे वो, he was asking quad. हाँ, I have already explained the quad first ever initiative sea observer missions, right? You have to write this became very important. Once the Houthi attack in the Red Sea and Malacca Strait, it is impacting the sea trade, right, of India. And not only in India, while India के साथ जिसका भी organizational relation है, उसके impact, उसको trade को impact करता है। तो you have to write this quite, and I to you too also. अच्छा, another thing is asking the question, PIB को कब कवर करना चाहिए, कितना दिन में करना चाहिए? हाँ, PIB को कब कवर करना चाहिए? मंथली या डेली करना चाहिए? हाँ, you have to complete your the Hindu portion 15 days, मंथ में 15 दिन पढ़ो, और 3 दिन में स्पेसिफिक टॉपिक जो मेंस के सिलेबस पे लिखा हुआ है उसके पीआईबी को उठा करके उसको वैल्यू एडिशन करके या कॉपी करके डिजिटल नोट्स बना लो, ताकि एग्जाम में जाने से पहले वो आपको मिल जाए। एंड वन थिंग यू कैन डू कि अगर ऐसे क्वेश्चन आता है LWE, टेररिज्म एंड डिजास्टर मैनेजमेंट तो इस बार नहीं आया, लेकिन अगर अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड आता है तो आप ये समझो उसको इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन स्टैंडर्ड पे आपको पहले से ही नोट्स बनाने चाहिए। इन बॉडी challenges, implications, benefits, government initiative you have to write, and you have to define the definite introduction what you are going to write about certain disasters, right? Another question is how to use government websites. I'm unable to do it, can you guide me? हाँ, exactly. Government website जैसे PIB हो गया, PRS हो गया, जैसे PIB और PRS और ORS भी खोलोगे तो उसमें आपको
अलग से, जैसे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, तो आप देखो GS3 का सिलेबस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कैसे रिलेटेड है। आप देखो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, जो आपका मतलब जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो वही आपका माई बाप होने वाला है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में IAS ऑफिसर्स को किस तरीके से ट्रेन किया जाता है, और IAS ऑफिसर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स कैसे होता है, तो दिस बिकम एथिक्स पोर्सन। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई which main syllabus is related to which government side, and for this purpose whatever government measures have been taken, you have to make the notes डिजिटली, मतलब डिजिटल अवेलेबल है तो आप वर्ड फाइल में या फिर आप एवर नोट में इसको बना करके रख सकते हैं। दैट वी आर डूइंग दिस प्रैक्टिस रेगुलरली। और एक ऋषभ है, आपको गुड इवनिंग बोला है। हाँ, गुड इवनिंग ऋषभ, ठीक है। अच्छा, मैं अपना एड्रेस कर देता हूँ। My question, like a few of the areas which you have asked here, like mineral reserve explanation. See, since it's not you cannot write everything. Briefly, you can mention, but then the question is demanding on impacts of mining of minerals. So your question should go with the impacts part and how to mitigate such impacts. आप देख क्या होता है कि लिखने को बहुत कुछ है, लेकिन आप पता चला कि आप बहुत ज़्यादा लिखने लगे, बहुत सारी चीज़ों को लिखने लगे, तो आपका वर्ड चला जाएगा। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा इन्वायरमेंट, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने रेज किया, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के साथ आप SIA सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी लिख सकते हो आप, क्योंकि वो सीधा डायरेक्ट लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट होता है। तो दैट यू कैन राइट इन द आंसर, यू कैन मेंशन दैट वन ऑल्सो। CCUS, I never studied in the news because these are some new emerging technology which we will not come across often mentioned in the newspaper. वो कुछ साइंटिफिक जो जर्नल्स होते हैं या कुछ नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, वहाँ पर कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज करके है। मैं इसको सेपरेटली कवर भी करूँगा, आई विल कवर अ सेशन ऑन दैट। तो उसमें मैं उसमें हाँ, मत्स्य 6000 समुद्रयान इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिशन बिकॉज वी हैव नाउ नेशनल मिशन ऑन ओशियन, है ना, और सागर संपदा या सागर रिसर्च जो है अनुसंधान, वी आर गिविंग लॉट ऑफ फोकस ऑन ओशियन रिसर्च। सो ओशियन रिसर्च वेसल, that's where you have a submersible called Samudrayan, the Matsya 6000, and what you have said that the project Sagar Manthan and all this can be written there. That again, sir has said, Ajeet sir has said that now the questions are getting interconnected with various domains. You can connect with environment, you can connect with security, like for the Great Nicobar redevelopment project. It is also connected with the part of the environmental impacts and also security, maritime security. So there are multiple dimensions are there that can be done there, and so whatever things you have given that for groundwater, for coastal intrusion, interliving river, so you have to first think that what are more relevant points to write, right? उसको ध्यान में रखना है कि आपको क्या points उस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। ऐसे लिखने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स को लिखना है जिसपे आपको मार्क्स मिलेगा। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने पूरा किया। और हाँ, यूट्यूब पे हम लोग लाइव होंगे। अजीत सर GS2 पेपर करेंगे, तो उसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, ये सारी चीज़ें आएंगे, तो वो हम लोग चैनल में करेंगे, उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप जाएंगे वहाँ पर तो वहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ पोस्ट कर दिया जाता है। नीरज नचिकेता आप करेंगे, सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, और उसमें आपको पोस्ट मिल जाएगा। दिया के भी जो चैनल्स हैं, देवघर IAS अकेडमी के भी जो चैनल्स हैं, वहाँ पर मैंने नंबर यहाँ पर शेयर कर दिया है 9162500508। वहाँ भी आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो दिया का है और जो ग्रुप है उसमें आप जुड़ सकते हैं। तो उसमें आपको डेली न्यूज़ फीड, हम लोग हर दिन DNF देते हैं। हर दिन हमारा साजिया मैम है जो कि दिया के यूट्यूब चैनल में डेली करंट अफेयर्स लेती है, तो वो सारी चीज़ों का आपको जानकारी मिलता रहेगा। यू विल बी गेटिंग ऑल दोज काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो विल हैव ऑल दोज काइंड ऑफ डिस्कशन सेशन। So keep in touch, and I thank Ajeet sir for giving his valuable time, and he is a part of the Diya family, so we'll be giving you more and more kind of a content which you require for the examination. तो चिंता करने की बात नहीं है, बस अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए, हम लोग आपको हर तरह से मदद करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।